So in today's webinar, we'll be explaining about sentiment indicators. Please note this is a 4 series webinar. It's a top-down approach. Basically, you need to know, uh, what the market is doing, and then once you know, uh, the overall broader market, it's very important to find the stock. So it's a 4 series webinar. We have already sent the dates in the Telegram channel. I'll be putting the Telegram channel link over here. If you have not joined yet, please do join. And I request everyone not to start the video. Please don't start the video. So yes, Jay will be the speaker. Jay is a market analyst at India Charts. So Jay, you can start. Yeah. So yes, good morning, everyone. Please note that this webinar we will be doing it in Hindi, and I'll be repeating it I'll be doing it in English and Hindi. So please don't worry. And end of the session, if you'll have any doubts, please make sure to clarify it, because like Chavan said, that this is a 4 series webinar. And over here, we are actually trying to give out the method that we actually use for identifying the stocks. So isme, one thing that we have learned over a period of time is that never fight the market, which means that agar market bullish hai, so if you end up being on the bullish side, then most likely you will end up getting right. But if the market is bearish, okay, and market नीचे जाने वाला है ऐसा लग रहा है, then trying to find out bullish bet and then trying to time against the market, being against the trend doesn't help much. You can be lucky once, twice, or thrice, but not every time. And eventually, when the decline picks up momentum, that's where a lot of stop losses will get hit, or you might end up seeing gap downs as well, and that may end up bringing a big drawdown to your portfolio. So that's why हमने ये देखा है कि अगर हम टॉप डाउन अप्रोच करें, तो इसमें अगर हमें ये पता चलता है कि निफ्टी का ट्रेंड क्या है, देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू बी इन द मार्केट, बिकॉज अगर मार्केट बुलिश लग रहा है एंड I am on the bullish side, then most likely, I'll end up getting right, provided, if I choose the right set of stocks. And this is where, we have, I've made a small presentation over here, which actually suggests this, that, there can be 2 approaches that can be followed. One is that कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स क्या है. Now the reason is that in our sentiment indicators हमारे पास तीनों ही टाइप के sentiment indicators है, which is short term, medium term, and long term. So people can actually use their if someone is a short term trader, they might just want to look at few particular sentiment indicators, because one of the feedback that we got from our earlier webinar was also कि अपने सेंटिमेंट इंडिकेटर्स तो सिखा दिया, बट किसको कैसे कब यूज करना, दैट बिकम्स अ बिट ऑफ अ चैलेंज फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड. नाउ हम ये डे इन डे आउट करते हैं, तो विद इन अ वेरी क्विक ग्लांस वी अंडरस्टैंड के मार्केट ट्रेंड्स क्या है, बिकॉज वी नो दैट विच आर द सेंटिमेंट इंडिकेटर्स जो हमें शॉर्ट टर्म में यूज करने चाहिए. अगर हमें शॉर्ट टर्म बॉटम्स या टॉप पकड़ने हैं, तो अगर हमें मीडियम टर्म टॉप्स एंड बॉटम्स पकड़ने हैं, तो क्या सेंटिमेंट इंडिकेटर्स होने चाहिए. एंड इफ आई एम प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, देन व्हाट इज द आइडियल टाइम, बिकॉज क्या होता है मार्केट में कि जब मार्केट गिरता है, तब हमें ऐसे ही लगता है कि गिर गिर के इट विल गो अ लॉन्ग वे ऑन द डाउन साइड, एंड it is said that market is the only place जहाँ पे सेल लगता है, and people don't want to rush into that, right, because they fear that they will end up losing money. But these sort of sentiment indicators will help you to bring some sane approach, and you will probably end up
being a contrarian investor purely based on the data. ऐसा नहीं है कि मैंने किसी दोस्त से बात कर लिया, 4 दोस्त से बात कर लिए, and I understand वो market का mood बहुत bearish है. This is not that way. We are actually combining the data of the entire market and trying to understand where are we in that greed and fear sort of cycle, right? So one way basically is कि हम इंडेक्स को जाने कि इंडेक्स whether it is forming a short term bottom or a medium term bottom or a long term bottom, and then we end up finding good setups either through RMI, which is a proprietary indicator, that is Rohit momentum indicator, or you can or if you want to you're more of a fundamental investor and so on, so that's where you can look at the RMI plus valuation approach, because as we have stated earlier as well, that sometimes value stocks can also end up becoming value trap if there is no momentum in the stock, right? So that's where a combination of momentum indicator plus valuation, if it comes into play, that becomes a very good timing tool, because like everyone know that prior to I think prior to pandemic, Tata Motors used to be one stock जो 600 से 250 गिर गया था, and everyone thought that there is huge value in that and so on. In COVID low, it ended up going to almost around 65-70 sort of levels, and only then it bottomed out, right? So when you combine RMI plus valuations, you might be able to get away with those kind of pitfalls and only participate in the stocks when the momentum is picking up. So one approach is this. The other approach, which is much more refined approach, and we also honestly tend to follow this approach, because this is like adding an additional layer, which means that कि हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म टॉप और बॉटम बनने वाला है. देन थ्रू द हेल्प ऑफ हीट मैप, ओके, व्हाट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इसके कौन से सेक्टर्स अच्छे करने वाले हैं, राइट? सो पहले हमने ये जाना कि मार्केट क्या करने वाला है. सेकंड हमने ये जाना कि कौन से स्टॉक कौन से सेक्टर्स अच्छे करने वाले हैं, एंड कौन से सेक्टर्स अच्छे करने वाले हैं वो आइडेंटिफाई करने के बाद हम ये देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स अच्छे करने वाले हैं. सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन इज दैट वी आर पुटिंग 2 to 3 layers, in which case chances of we getting into a bad stock reduces substantially. Now it can very well happen that you may end up missing some very big multi-bagger kind of stocks which are not in the index, because वो heat map में capture नहीं होंगे. So that's where we also ended up doing के हम heat map सारे stocks का देखते हैं, that is across all the NSE stock, to identify which are the pocket of strength and weakness. But yes, broadly, when you end up putting more and more layers, that's where your results will keep narrowing down, right? अगर आपको ये अप्रोच में मान दो कि 50-100 स्टॉक लग रहे हैं, तो ये अप्रोच से शायद आपका मतलब वो जो स्टॉक्स सिलेक्शन करना है वो शायद 20-30 स्टॉक्स हो जाए. So in that way, you might be able to filter more, and you might be able to study those stocks in depth, and that will end up helping you to trade and invest with confidence. So without wasting much time, like I said, in today's webinar we will be covering only this part, which is how to find the short term, medium term or long term tops and bottoms through the Nifty index. Okay, once we understand this, that's where in the next webinar we'll go to heat map, and then RMI, and then this strike valuation setup, which is RMI plus valuation. Okay, now again, the format will be similar. I will be presenting you for 45 minutes to 1 hour. Later on we will open the floor for questions, and if you have any questions, be it in Hindi or English, we are happy to address it. Okay, now this is a very, very important slide, which you might want to make a note of, because as you can see over here, the first one, this is sentiment indicators, and this is basically for short term. Okay,
these sentiment indicators are basically for short term. So wait, actually let me just change it and make it even more precise. Okay. So for short term, typically we would look at daily swing, average swing, and OI PCR, which is the open interest PCR, which is smoothened with the 9-day average. For the medium term, we would look at the 20-day AD ratio, the FI's positioning, client's positioning, and sometimes even client plus FIA positioning. Even that ends up giving us a very good clue. In the long term, we look at volume PCR, we look at the 40-day AD ratio, we look at DII's positioning, because even DII's positioning end up, giving us a good tops and bottoms from medium to long term perspective. And then we have the futures OI by index, which is again a very important indicator, and that sort of helps you to understand the sentiment, how it is from a long term perspective, because a lot of activity when it happens in the futures, that typically marks the late stage of the up move. So basically, at least what will happen is that if you're a long term investor or a medium term or a short term investor, I mean trader, then looking at these indicators, you would at least know that when is the time that you should be managing your risk and being very proactive in that, and when is the time where you have to be greedy and start looking out and hunting out for stocks. Okay. So once again, because this is very important, I am repeating it in Hindi as well. जैसे हमने स्टार्ट में कहा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें मार्केट क्या करने वाला है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आपको बेसिकली अगर आप ये 3 इंडिकेटर भी देखोगे तो इट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू गेज कि हम शॉर्ट टर्म बॉटम बनाने वाले हैं या नहीं है. ओके. अब ये सारे सेंटिमेंट इंडिकेटर्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब मार्केट में एक्सट्रीम होता है तब हमें हमेशा ऐसे ही लगता है कि मार्केट गिरते ही जाएगा या मार्केट बढ़ते ही जाएगा एंड विल एंड अप लूजिंग आउट अपॉर्चुनिटी. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के मार्केट हमेशा एक पेंडुलम से दूसरे पेंडुलम पे शिफ्ट होते ही जाते हैं. राइट. वी गेट फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अदर. सो आइडेंटिफाइंग के हम कौन से एक्सट्रीम पर है, वेदर वी आर एक्सेसिवली बेरिश और द मार्केट मूड इज एक्सेसिवली बुलिश, ये अगर हम जान गए तो काफी हद तक हमारा स्टॉक्स के अंदर का टाइमिंग काफी अच्छा हो सकता है, जिससे कि वी कैन एंड अप गेटिंग अ गुड हिट रेशियो. राइट. So that will eventually end up improving your profitability while trading as well. तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, जस्ट टू रिपीट वंस अगेन, आपको डेली स्विंग, एवरेज स्विंग और OIPCR देखना है. अगर आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको 20-day AD रेशियो, FII का पोजिशनिंग कैसा है, क्लाइंट का पोजिशनिंग कैसा है, FIIs प्लस क्लाइंट जो कि कभी कभार सिग्नल देते हैं बट वो भी बहुत रिलायबल सिग्नल्स होते हैं तो उन्हें देखना है. फिर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो, 40-day AD रेशियो, DII के पोजिशनिंग क्या है वो देखने इंपॉर्टेंट है बिकॉज आफ्टर कोविड स्पेशली DII का पोजिशनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है टू अंडरस्टैंड द मार्केट मूव्स. एंड फ्यूचर OI बाय इंडेक्स, जिससे कि हमें ये पता चल रहा है कि कितने लोग मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड इन टर्म्स ऑफ लेवरेज लोगों का पोजिशनिंग कैसा है, उससे ये सारी चीजें पता चलती है. राइट. सो टू नो ऑल द सेंटिमेंट इंडिकेटर्स यू हैव टू लॉग ऑन टू स्ट्राइक. जब आप स्ट्राइक में लॉग इन करेंगे तब आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा और ये डैशबोर्ड आप ये लेफ्ट हैंड साइड पे आप हवर करके जब आप सेकंड आइकन पे आओगे विच इज एनालाइज, वहां पर एक सेंटिमेंट इंडिकेटर का पूरा सेक्शन दिया गया है. राइट. तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स पोजिशनिंग है, मोमेंटम स्विंग है, डेरिवेटिव डेटा है, मार्केट ब्रेथ है. अभी
ये चीज अगर आपको नोट करनी है आप नोट कर सकते हो। ये वीडियो रिकॉर्ड भी होगा, तो यू कैन अगेन टेक द बेनिफिट ऑफ दैट एंड रीविजिट दिस वीडियो। एंड यू नो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज के आप अपना टाइम होराइजन चूज करिए कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, मीडियम टर्म ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, आई मीन मीडियम टर्म इन्वेस्टर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। वंस यू फिगर आउट दैट, all you got to do is that just focus on these indicators. Okay, and I can assure you that this will help you to time the market substantially, because ये चीज हम डे इन एंड डे आउट हम करते आए हैं। हमारा जो इंडिया चार्ट्स जो हमारा पेरेंट कंपनी है, वेयर वी एंड अप प्रोवाइडिंग न्यूज लेटर्स एंड very interesting ideas on which setup is likely to do well, be it index stocks or whatever is happening in the globe, because हम वहाँ पे एक दूसरा अप्रोच भी हम फॉलो करते हैं, वेर इज एनालाइजिंग द होल मार्केट। एंड उसी में when we actually end up teaching our mentorship students as well, we make extensive use of the sentiment indicators to gauge the market mood, बिकॉज एक बार हमने ये सही पकड़ लिया कि मार्केट क्या करने वाला है, वेदर इट इज गोइंग टू फॉल और इट इज गोइंग टू राइज, हमारा मोस्टली आधा काम ठीक हो गया है इन, बिकॉज हम वो मार्केट ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेंगे। वंस यू आइडेंटिफाई द मार्केट ट्रेंड, ऑल यू हैव टू एंड अप डूइंग इज दैट के स्टॉक्स फाइंड आउट कर रहे हैं जहां पे सेटअप्स अच्छे हैं। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ स्कैनर्स, you can do lot more quickly and swiftly those things. So first, when we look at the short term sentiment indicators, so then it comes down to daily swing, average swing. Okay, अब daily swing ये है कि हम Jay, sorry to interrupt, a light version please. yeah sorry yeah. And one more thing, people are asking the number of days if you are specifying what is short term. Sure. So this, as I will teach how to use the sentiment indicators, I'll tell you the relevance of that as well. Okay, so the first thing is the daily swing. Now when we look at the daily swing, just to give you a logic how we are calculating it, हमारा जो रोहित मोमेंटम इंडिकेटर है, विच इज अ प्रोप्राइटरी इंडिकेटर, ये हम सारे एफएनओ बास्केट पे हम रन करते हैं, ठीक है। एंड हम ये गेज करते हैं कि कितने लोगों का, कितने स्टॉक्स का आरएमआई राइज हो रहा है। ओके, एंड दैट इज व्हाट वी प्लॉटेड ओवर हियर। तो इफ इट इज टेलिंग यू 56%, तो इट मीन्स के 56% of the FNO stocks, that is where the momentum is rising right now. Okay, and this, if you see, this oscillate between 0 to 100, and typically जब ये low single digit में आ जाता है, that's when it gets extremely oversold. But अगर ये 20 पे आ जाता है, so that is also a good level to expect reversals. At the same time, on the top, अगर आप देख सकते हो तो 80 के आसपास जब आता है, तब यू कैन से दैट ये एक ओवरबॉट जोन में पहुंच गया है, and when it exceeds 90, that's where it becomes extremely overbought. Now the relevance of daily swing is purely from 1 day to 5 day perspective, ठीक है। and this can be extremely helpful for the you can say the weekly option traders, because इसमें क्या होता है कि जब जब भी ये ओवरसोल्ड में आ जाता है, ठीक है, दैट्स वेयर यू कैन एंड अप सीइंग अ गुड रिकवरी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। ओके, एंड जब जब भी ये एक्सट्रीम अप मूव में आ जाता है, ओके, देन you might end up seeing a sideways consolidation or a correction. Actually, the same holds true on the downside as well. So say if you are in a bear market, okay, and this reading goes to say somewhere around single digit or so, then what may end up happening is that either you get a bounce, या तो आपको एक sideways consolidation देखने मिलेगा। तो see, if you are an option trader, especially weekly, you might want to time it with more precision, right? And that's where this indicator will come into play, because अभी हम अगर ये देखेंगे ये मूवमेंट, तो अब ये देख सकते हो कि जब ये 90 पे आया था यहाँ पर, ओके, यहाँ पे 91 का रीडिंग बताया था। यू कैन सी फॉर 1 2 3 4 and 5 days,
सो इट इज लिटरली अ वीक जहां पर वो एक रेंज में था, राइट? एंड जब वो रेंज में था तब वो नीचे आया एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड टू पिक अप मोमेंटम. सो जब जब भी ये इंडिकेटर, इफ यू सी इट एट द 90 levels or plus, that's where you have to बी प्रिपेयर्ड के यहाँ पे या तो साइडवेज कंसोलिडेशन आ सकता है या फिर यू माइट इवन एंड अप सीइंग करेक्शन. ओके, जैसे कि यू कैन सी ओवर हियर एज वेल कि यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 95 का रीडिंग आ गया था, फिर 1 2 3 4 5 दिन अगेन इट वेंट साइडवेज एंड देन इट सॉ दैट 300-400 पॉइंट्स काइंड ऑफ अप मूव. So when we look at the daily swing purely, that is relevant from 1 to 5 day perspective, and it can help you to time the tops and the bottoms very efficiently. The other thing is average swing, जो थोड़ा ज्यादा पोजिशनल है. मतलब यू कैन से दैट इसका जो अप से डाउन साइकिल है दैट कैन इवन लास्ट फ्रॉम 7 days to 14 days काइंड ऑफ टाइम फ्रेम. तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि ये जो डेली स्विंग है जो हम कैलकुलेट करते हैं उसी पे हम एवरेज रन करके एवरेज स्विंग कर देते हैं. ठीक है, तो इसका अगर आप देखोगे तो इसकी जो लाइंस है वो काफी ज्यादा स्मूथ है. ओके, and see, one thing that you have to note is that once the daily swing and the average swing दोनों अगर एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं ना, मतलब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ओके, लाइक यू विल सी ओवर हियर, मतलब यहाँ पे ये ऑलमोस्ट दोनों 90 पे पहुंच गए थे एंड वी एंडेड अप सीइंग सम कंसोलिडेशन. एंड in fact if you see largely this was a period of consolidation. Okay, एंड जब तक ये कंसोलिडेट हुआ तब तक ये स्विंग नीचे आ गया एंड देन इट अगेन स्टार्टेड राइजिंग हायर. ओके, बट इसमें एक चीज क्या होगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम कब एक्सट्रीम में आ गए हैं, एंड दैट्स वेयर इट विल हेल्प यू टू टाइम द ऑप्शंस एक्सट्रीमली वेल, स्पेशली अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हो तो. ओके, एंड देन मेनी क्वेश्चंस में आ रहा है इसकी इसको हम निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए ऐसे सब कर सकते हैं. सी द थिंग इज दैट हम जब हम देखते हैं तब हम ब्रॉड बास्केट देख रहे हैं एंड वी हैव फाउंड दैट ये ज्यादा निफ्टी को रेप्लिकेट करता है. ओके, एंड सी अगर मार्केट बहुत बुलिश है, ठीक है, एंड इफ बैंक निफ्टी से इज अंडर परफॉर्मिंग, तो जब कंसोलिडेशन या करेक्शन आएगा तब it would be implied के बैंक निफ्टी which is more weak, that may end up falling more as well. Okay, so that's where ये सारे डेटा आपको एक जजमेंट लेने में हेल्प कर सकते हैं. बट ये देख के अगर आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करें देन इट माइट नॉट बी अ राइट आइडिया, बिकॉज बैंक निफ्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जस्ट 13 स्टॉक्स और उसमें भी 4 स्टॉक उसे डिक्टेट करते हैं, राइट? इनफैक्ट निफ्टी थोड़ा और ज्यादा ब्रॉड बेस्ड है एंड दैट्स वेयर वी हैव फाउंड फाइंडिंग टॉप्स एंड बॉटम्स इन निफ्टी एक्सट्रीमली हेल्पफुल जब हम ये मेथड को अप्लाई करते हैं. तो एंड टिपिकली इसमें भी कैसे होता है कि सी व्हेन वी आर इन अ बुल मार्केट एंड दैट वी गेट टू नो बिकॉज वी एंड अप मेकिंग हायर हाई हायर लोज एंड ऑल. तो वहां पर जब हम ये देखेंगे कि दोनों ही इंडिकेटर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे आ जाते हैं, विच इज दैट बिलो 10 लेवल सिंगल डिजिट आ जाता है ना, then it is like a major bottom can be in place, especially in the short term. Okay, and that's where you might want to time your trades accordingly, because जैसे आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि at this low, okay, the reading was actually somewhere around 5 or 6. In fact, during the day it had even gone to 4 levels or so. ओके, एंड सिमिलरली अगर आप एवरेज स्विंग देखोगे तो वो भी सिंगल डिजिट में आ गया था. तो दैट एंडेड अप बिकमिंग अ मेजर बॉटम. ओके, एंड in fact even when you see them both approaching the first line as well, that may also end up becoming an important loss, like you can see over here. ये स्विंग में यहाँ पे स्विंग ने बॉटम दिया, ओके, बट एवरेज स्विंग ने बॉटम नहीं दिया एंड एवरेज स्विंग ने बॉटम खाली यहाँ पर दिया. So that's where this ended up becoming a more reliable bottom, right? Similarly, अगर आप टॉप में भी देखोगे तो ये दोनों इंडिकेटर यहाँ पे जाके टॉप हुआ एंड यहाँ पे हमने ये छोटा डाइवर्जेंस देखा और उसके बाद हमने करेक्शन देखा, राइट? बट अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर भी ये इंटरिम में स्विंग 80 पे आ गया था, बट एवरेज स्विंग वाज वेल अबव वेल बिलो 80.
So this may not end up being a major top as such, right? तो that's where अगर ये दोनों इंडिकेटर ही एक साथ देते हैं तो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि यहाँ पर जो कंसोलिडेशन या साइडवेज करेक्शन या जो भी कहे हम वो आएगा. सो इट कैन बी अ लिटिल मोर प्रोलॉन्ग, and that's how you may want to position it. Okay, because even if you see, I mean, हमने ये सारे काफी मतलब कैसे कहते हैं कि हम डाइवर्जेंस देख देख के भी मार्केट को गेज करते हैं. एंड लाइक आई टोल्ड यू, वी आल्सो लुक एट अदर सेंटिमेंट इंडिकेटर्स एज वेल. तो जब मैं शॉर्ट टर्म में देखूं और उसको मैं ओपन इंटरेस्ट पीसीआर के साथ भी मिलाऊं, ओके, देन ये जो ओ आई पीसीआर है, ओके, ये आपको डेरिवेटिव डेटा में मिलेगा. एंड डेरिवेटिव डेटा में दिस इज द रेशियो, बेसिकली पुट कॉल रेशियो ओपन इंटरेस्ट विच इज ओ आई. तो अब जब हम इसको भी देखेंगे तो क्या होता है कि ये भी एक रेंज में चल रहा है, ठीक है. एंड इसमें क्या होता है, एज द मार्केट फेजेस पास बाय, रेंज शिफ्ट होते रहते हैं, राइट. तो हम ये जो रेंज जो शिफ्ट होते हैं ना, उसी अकॉर्डिंगली हम भी, हमारे पास मतलब हमारे बैकएंड में वो कंट्रोल है कि वी कैन एंड अप शिफ्टिंग द रेंज. तो एज यू कैन सी ओवर योर, आई मीन कोविड के पहले एक अलग रेंज चलता था. कोविड के, इनफैक्ट कोविड के टाइम में भी वो रेंज चलता था, बट आफ्टर 2021 थिंग्स बिकेम लिटिल डिफरेंट. तो यहाँ पे जब आप देख सकते हो कि जब जब भी ये 0.72 या उसके नीचे आने लगता है, दैट्स वेयर अ शॉर्ट टर्म बॉटम कैन अकर. ओके, एंड जब जब भी ये 1.5 ऐसे आ जाता है, ठीक है, सो दैट्स वेयर इट टेल्स यू दैट यहाँ पे हम सॉर्ट ऑफ पीक कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ द बुलिशनेस. उसके बाद व्हाट यू मे एंड अप सीइंग इज डाइवर्जेंस ओवर ईयर. एंड जब आप ये देखते हो कि ये लाइन कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है एंड द मार्केट इज गोइंग अप, देन इट इज अ साइन ऑफ कॉशन. नाउ द रीजन बीइंग दैट ये इंडिकेटर कैसे फॉर्म होता है उससे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, विच इज द ओपन इंटरेस्ट पीसीआर. तो जब जब भी पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ते जाता है, ठीक है, तब यू विल एंड अप सीइंग द रेशियो राइजिंग हायर. ओके, एंड ये वाला इंडिकेटर हम एक्चुअली ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बिकॉज इन द मार्केट इट इज नोन दैट सेलर्स आर द वन विच आर गिविंग ह्यूज मनी एज अ मार्जिन to earn very little. Okay, so we consider them as smart money because they are risking a lot of capital for little money, right? So they would want to be accurate and they might want to be on the right side. तो इसके वजह से what happens is that when the ratio starts rising higher, it tells you that people are more willing to short puts than calls. एंड जब आप ज्यादा पुट शॉर्ट करते हो, इट टेल्स यू दैट द मार्केट मूड इज बुलिश. एक ऐसा ही फेज ना हमने ये इसमें आइडेंटिफाई किया था व्हेन द मार्केट वाज गोइंग डाउन. ओके, द ओआईपीसीआर वाज एक्चुअली राइजिंग हायर. सो दिस वाज टेलिंग यू कि पुट सेलर्स आर मोर कॉन्फिडेंट के मार्केट में डाउनसाइड लिमिटेड है, राइट. एंड दैट्स वेयर यू एंडेड अप सीइंग ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट काइंड ऑफ रैली फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट. तो अब जैसा कि मैंने कहा कि सी, इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर एंड यू कंबाइन ऑल द थ्री थिंग्स, और तीनों चीज आपको जब बताता है कि ये ओवरसोल्ड में है, दैट्स वेयर यू आर लाइक अ एट अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉटम. एंड यहाँ पर से अच्छा बड़ा मूव आने का बहुत अच्छा चांस है. सो वेट, लेट मी जस्ट पुट दिस अक्रॉस. सो अगर मैं इसमें डेली स्विंग ऐड कर दूं और इसमें मैं एवरेज स्विंग ऐड कर दूं, ओके, एंड देन व्हेन वी एंड अप आइडेंटिफाइंग एरियाज जहां पर तीनों एक साथ बॉटम किए हैं. सो वन वुड बी, आई कैन इजीली से दिस इज वन ऑफ द फेज. एंड आफ्टर दैट वी सॉ अ वेरी बिग रैली, राइट. उसके बाद अगर मैं देखूं तो एक ये फेज था जहां पे ओ आई पीसीआर, सी, आपको एक बात ये भी समझना है कि थोड़ा बहुत कभी कभी इसमें लीड लैग हो सकता है, बिकॉज द ओ आई पीसीआर दैट वी आर कैलकुलेटिंग दैट इज अ 9-day एवरेज, राइट.
तो वो थोड़ा धीरे धीरे नीचे कम आएगा, बिकॉज हम उसका एवरेज ले रहे हैं। तो जैसे कि आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर ये वाले में भी आपको नियरली अराउंड द सेम टाइम यू आर गेटिंग द बॉटम एंड यू एंडेड अप सीइंग दिस 1000 पॉइंट काइंड ऑफ रैली, ओके। एंड इवन एट द recent लो विच वाज ओवर ईयर, दैट इज वेयर यू एंडेड अप गेटिंग। सो आपको हमेशा ये पैटर्न देखने मिलेगा कि डेली स्विंग में सबसे पहले बॉटम बनेगा, फिर एवरेज स्विंग में बनेगा, बिकॉज एवरेज स्विंग इज अगेन एवरेज ऑफ डेली स्विंग, और फिर आपको OIPCR में आपको बॉटम दिखेगा, बिकॉज दैट अगेन इज स्लाइटली स्लो देन द डेली स्विंग। तो जब ये तीनों में एक साथ बॉटम बन जाता है या थोड़ा लीड लैग में बनता है, दैट्स वेयर यू विल ऑलवेज एंड अप सीइंग अ वेरी गुड मूव इन द शॉर्ट टर्म। दैट इज आपको नेक्स्ट यू कैन एक्सपेक्ट, इजीली एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट 5 से 10 दिन में आपको बहुत बढ़िया मूव देखने मिल सकता है। सो व्हेन अगर एक इंडिकेटर खाली बता रहा है, सो यू हैव टू टेक अ नोट ऑफ दैट। बट अगर 2 या 3 इंडिकेटर आपको एक साथ बता रहा है कि बॉटम बनने का चांसेस है, देन यू हैव टू बी इवन मोर एक्टिव एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर ट्रेड्स, बिकॉज ये सारे चीजें जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ऑफन नहीं होता है कि तीनों एक साथ बॉटम बने। सो दैट्स वेयर इफ दे, आई मीन व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज के ऐसे सब सेटअप्स आपको महीने या 2 महीने में एक बार मिलेंगे, एंड जब वो मिलेंगे एट दैट टाइम यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड गो ऑल आउट विद द ट्रेड to make material difference to your PNL account, because इतना हम सब एनालाइज करें और उसके बाद कुछ ट्रेड भी ना ले, then it is of no use, right? So that's where this sort of helps us a lot इन अंडरस्टैंडिंग द मार्केट मूड। एंड देखिए क्या होता है कि जब ये मार्केट ऐसे गिरते जाता है ना, तब हमें हमेशा ऐसे ही लगेगा कि ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है, इतना मार्केट बढ़ चुका है। आई मीन मेनी ऑफ द पीपल माइट हैव मिस्ड इट ऑल्सो, क्योंकि रन अवे रैली भी आया था, एंड दे आर ऑलवेज ऑन द साइड लाइन होपिंग के करेक्शन आएगा, करेक्शन आएगा। एंड जब आता है, ओके, एंड ये शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स इतने ओवरसोल्ड भी हो जाते हैं, तब भी अगर आप एक्शन ना लो और आप सोचो कि और आएगा नीचे, बिकॉज रोज गिरते जा रहा है, देन इट डजंट मेक सेंस। सो समवेयर व्हेन यू एंड अप seeing reversals happening in these sort of indicators, so that's where you have to make it count, especially from your PNL perspective, okay? Now this, like I showed to you, was a short term setup, and इसमें जैसा कि मैंने कहा कि डेली स्विंग है, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट वंस अगेन, डेली स्विंग है दैट इज रेलेवेंट फ्रॉम 1 day to 5 day perspective. Average swing is relevant from 5 day to 10-15 days kind of perspective, and OIPCR is little more short termish, like you can say कि अगर सपोज OIPCR है, वो अपने एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे आने के लिए शायद आपको 15-20 दिन लगा देगा, बट जब तीनों चीज एक साथ कोइंसाइड होता है, तब यू हैव टू बी तब यू हैव टू टेक अ नोट ऑफ दैट। एंड स्पेशली देखिए, अगर बुल मार्केट रहेगा और तीनों एक साथ ऊपर आएंगे ना, तो देर इज अ चांस कि यू माइट नॉट एंड अप सीइंग अ बिगर करेक्शन, बट ऐसा हो सकता है कि बड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। जैसे कि अगर आप ये देखिए, तो यहाँ पर एवरेज स्विंग और डेली स्विंग ये दोनों ओवरसोल्ड पे आई मीन ओवरबॉट पे आ गए थे, बट OIPCR was way below its previous peak, right? And it only ended up coming to this peak, but again यहाँ पर ये तीनों ने एक साथ तो टॉप नहीं बनाया था, इनफैक्ट देयर वाज अ लीड लैग। बट व्हेन यू लुक एट द बॉटम, which I think they formed over year as well, ठीक है, यहाँ पर ये ओवरसोल्ड हो गया था, ये ओवरसोल्ड हो गया था, ये ओवरसोल्ड हो गया था, एंड दैट्स वेयर वी एंडेड अप गेटिंग अ गुड मूव ऑन द अपसाइड एज वेल। सो बेसिकली व्हेन देयर इज अ बुल मार्केट, ये तीनों एक साथ आपको टॉप आउट होते हुए दिखेंगे, एंड इनफैक्ट इफ देयर इज अ बेयर मार्केट रैली विच यू मे एंड अप सीइंग, तब ऐसा हो सकता है कि ये तीनों इंडिकेटर एक साथ ही शायद पीक आउट हो जाए। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे OIPCR हुआ, यहाँ पर आपको डाइवर्जेंस दिखा, एंड अगेन लाइक आई टोल्ड यू, वो पैटर्न आपको रिपीट होते हुए दिखेगा कि डेली स्विंग पहले पीक होता है, फिर एवरेज स्विंग होगा, फिर OIPCR होगा, एंड दैट्स वेयर यू एंडेड अप सीइंग अ करेक्शन लेटर ऑन, ओके?
So, depending on which market are you in, bull or bear market, that's where, you will end up finding good tops and bottoms. जैसे कि अगर बुल मार्केट है तो ये सारे का कॉम्बिनेशन आपको बॉटम पिक करने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा. एंड इफ यू आर इन अ बेयर मार्केट और अ करेक्टिव मार्केट, तो आपको टॉप्स पकड़ने में ये काफी मदद कर सकता है. Now, when we move to the medium term indicator, okay, ये typically, if you ask about the time horizon, this can work well from 2 month to 3 month perspective. ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ पर से मुझे ये इंडिकेटर ने बॉटम दे दिया है, तो it can work out very well from next 2 to 3 month perspective, and this I will show you with the evidence as well. So, इसमें एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस करने का ये है कि हम FIIs का पोजिशनिंग कैसे देख सकते हैं. I mean, हमें कैसे देखना चाहिए मार्केट में. तो इसका हमने ऑलरेडी काफी सारे वेबिनार्स भी किए हैं टू अंडरस्टैंड, क्योंकि क्या होता है कि हर एक पार्टिसिपेंट का वे ऑफ ट्रेडिंग डिफरेंट है. ठीक है, जैसे कि FIIs है, दे ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड. दैट मीन्स कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब उनका पोजिशनिंग भी शॉर्ट से लॉन्ग होगा. ओके, जब मार्केट नीचे जा रहा है तब उनका पोजिशनिंग लॉन्ग से शॉर्ट होगा. तो दैट इज हाउ दे ऑपरेट. ओके, एंड अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर विल सॉर्ट ऑफ हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि वो अपना पोजिशन कैसे ट्वीक करेंगे. राइट. सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि जब वो लॉन्ग और शॉर्ट करते हैं तब इवेंचुअली दे रीच एन एक्सट्रीम. एंड जब भी ये सेंटिमेंट इंडिकेटर्स का एक ब्यूटी यही है कि जब भी वो एक्सट्रीम्स में आ जाते हैं, दैट इज द पॉइंट व्हेन यू हैव टू एक्ट. ओके, बिकॉज व्हाट विल हैपन इज दैट जब वो एक एक्सट्रीम पे आते हैं, एंड जैसा कि मैंने बताया कि ये जो चीज है ये सॉर्ट ऑफ मीडियम टर्म इंडिकेशंस है. ओके, सो यहां पर से क्या होगा कि जब ये एक्सट्रीम्स बनेंगे तो ये नेक्स्ट 2 से 3 महीना अच्छा मूव आना एक्सपेक्टेड रहेगा. तो अगर आपने 2 से 3 महीने का मूव कहां पर आने वाला है वो आपको समझ गया, सो दैट्स हाउ यू कैन पोजिशन योर स्टॉक अकॉर्डिंगली. सो दैट्स वेयर योर रेट ऑफ सक्सेस विल इंक्रीज मैसिवली, बिकॉज आपको ये पता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है. ठीक है, एंड दैट्स वेयर क्या होता है कि जब मार्केट गिरता रहता है, ठीक है, हमारे बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं इन प्ले के, अरे ये US बेकार हो गया, ये बेकार हो गया, वो बेकार हो गया, एंड हमारा इकोनॉमी का XYZ हो जाएगा, वी मे सी अ लॉट ऑफ डैमेज एंड सो ऑन. बट दीज आर ऑल डेटा. ओके, यहाँ पर कुछ इमोशंस नहीं रहता है. तो जब भी आपको दिखेगा कि ये सारे चीजें एक्सट्रीम हो रहे हैं, दैट्स वेयर यू हैव टू फ्लिप इट. आई मीन, इफ यू हैव बीन बेरिश एंड आपको अगर 10 डेटा, आई मीन आपको 3-4 डेटा पॉइंट बता रहे हैं कि नाउ इट इज द टाइम वेयर यू हैव टू मेक इट काउंट एंड यू हैव टू बी कॉन्ट्रेरियन, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट. ओके, एंड एटलीस्ट इफ नॉट एनीथिंग, तो आप ये वाले फेज में अगर आप शॉर्ट भी नहीं रहोगे, मतलब आपको मेन तो ये क्लैरिटी आ गया कि आपको करना क्या है, तो आपको बहुत सारी चीजें इन प्लेस फॉलो हो जाती है. जैसे कि आपको ये पता है कि आपको ये एक्सट्रीम आ गया है, ठीक है, एंड यहाँ पर से एटलीस्ट शॉर्ट नहीं करना है आपको. ओके, यू हैव दैट क्लैरिटी कि इसमें अभी ये पॉइंट पे से मुझे शॉर्ट नहीं करना है. सो दैट्स वेयर यू कैन फॉल, आई मीन यू कैन गेट अवे विद द पिटफॉल. ओके, सो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि FIIs का पोजिशनिंग वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड में रहता है. ओके, ये ऊपर गया तो वो लॉन्ग करते जाते हैं. एंड तो इसमें क्या होता है कि जब भी ये 2,50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो अभी की एक्चुअली लॉट साइज चेंज हो गया है, सो दैट्स व्हाई वी एडजस्टेड द एंटायर डेटा. तो पहले वो जो लेवल था दैट वाज 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर वो हम 50 के कॉन्ट्रैक्ट्स में देखें तो अब ये 250 हो गया है. एंड सिमिलरली अगर ये 250 से 3,40,000 के रेंज में उनके शॉर्ट्स आ जाते हैं, सो दैट इज द टाइम वी सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड थ्रू द डेटा के नाउ दे आर एक्सट्रीमली शॉर्ट, एंड यहाँ से डायरेक्शन पलटने का चांस हो सकता है. बिकॉज यू वुड सी फ्रॉम द डेटा वो हमेशा एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे जाते हैं. And that's where you end up getting good moves on the up and the downside. And ये जब आप पीरियड जब आप मेजर करके आप देखोगे
it can typically last from 1 month to 3 month kind of perspective. And that will help you to trade and invest more confidently for the next few weeks and months. Okay, तो ये एक FIIs का है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर उनके लॉन्ग्स एक्सट्रीम हो जाते हैं, दैट्स वेयर यू हैव टू बी कॉशियस कि यहाँ पर करेक्शंस आ सकते हैं. And and see, we have given all the possible tools to y'all to measure and understand it everything by looking at the past data. जैसे कि अगर मैं ये करना चाहूँ, ठीक है, कि टॉप होने के बाद कितना करेक्शंस आ सकता है, I can simply go and measure it over here. ये कितना डिक्लाइन दिया है हर एक फेज में. जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ 10% का डिक्लाइन दिया. ओके, यहाँ से जब करेक्शन आया था, these all analysis will help you to get a perspective. यहाँ पे 4% का करेक्शन आया, यहाँ पर 7% नियरली करेक्शन आया. ठीक है, यहाँ पर से जब उसने टॉप का इंडिकेशन दिया, ओके, तब क्या हुआ, तब यू कैन सी दैट यहाँ पे बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं आया था, इनफैक्ट थोड़ा अप डाउन भी हुआ था. बट द मेन थिंग वाज दैट कि ये ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर ये सिग्नल दिया और देयर वाज अ रन अवे रैली. इनफैक्ट यहाँ पे पॉज आया, एंड इफ यू वुड आल्सो सी द ब्रेथ, that was continuously getting bad. So again, this would have helped you avoid the pitfalls, right? So the main point of actions are when they come to the extreme. Okay, and ये ऐसा नहीं है कि ये extreme में आ गया तो बस हम blindly short करें. Then what we would want to do is that we would want to wait for a reversal. Like अगर यहाँ पे supposingly trend line breakout वगैरह आ गया है, okay, then we have to be take even more note of that. But at least जब ये top पे आएगा, you would not want to commit a lot of money into that, because that will be very problematic, because that would be the time जहाँ पे breath भी थोड़ा थोड़ा करके deteriorate भी होना चालू करेगा, and then you may end up getting a meaningful correction for the next few days or weeks, right? अब दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इज बेसिकली द क्लाइंट नेट पोजीशन. और माइंड यू, ये जो मैंने आपको जो बताया, ये नेट फ्यूचर्स इंडेक्स के पोजीशन है. ठीक है, तो इट एक्चुअली इंक्लूड्स निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड एवरीथिंग, बट द मैसिव वॉल्यूम इज एक्चुअली इन निफ्टी ओनली, विच इज आई थिंक 70-80% ऑफ द एंटायर डेटा इज एक्चुअली ऑफ निफ्टी ओनली, राइट? तो निफ्टी ही एक्चुअली ये पूरा डिक्टेट करता है. Similarly, when we look at the clients data, तो clients exactly opposite है FIIs के. तो clients क्या करते हैं कि जब मार्केट बढ़ते जाता है, ठीक है, तब उन लोग शॉर्ट करते जाते हैं. ओके, एंड जब मार्केट बॉटम होने वाला रहता है, ठीक है, जैसे कि यू कैन सी ओवर ईयर, मार्केट जब बॉटम करने वाला रहता है और ये जो करेक्टिव फेज में ये वो लॉन्ग करते जाते हैं, तो इनका जो अप्रोच है वो FIIs के टोटली ऑपोजिट है. तो क्लाइंट्स के केस में क्या हो जाता है कि जब मार्केट बॉटम पे आने वाला रहता है, दैट इज द टाइम व्हेन दे आर मैसिव लॉन्ग, एंड व्हेन द मार्केट इज गोइंग टू टॉप आउट, when the market is going to go down, that's where they end up becoming massive they end up creating massive short positions, like you can see over here. ठीक है, ये टॉप था, यहाँ पर उनका शॉर्ट्स एक्चुअली 5-year हाई के रिकॉर्ड पे आ गया था. ठीक है, सिमिलरली यू कैन सी ओवर ईयर कि यहाँ पे निफ्टी में बॉटम बना और उनका जो लॉन्ग पोजीशन है वो एक्सट्रीम में आ गया था. तो क्लाइंट के केसेस में अगर आप देखो तो ये जो लाइन है जो अप और डाउन, दोनों अप लाइन है, वो अगर क्लाइंट 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट से लेकर 2,80,000 कॉन्ट्रैक्ट पहुंच जाते हैं, तो दैट्स वेयर यू कैन से दैट क्लाइंट्स आर एक्सट्रीमली लॉन्ग. एंड ये क्लाइंट्स में इंक्लूड होते हैं ऑल योर रिटेल ट्रेडर्स ऑफ कोर्स, then all the HNIs and the smart money, so these all are categorized in the client section. तो क्या होता है कि जब ये एक्सट्रीम लॉन्ग हो जाते हैं तब मोस्ट लाइकली यू एंड अप सीइंग बॉटम्स इन द मार्केट. ओके, एंड जब ये एक्सट्रीम शॉर्ट हो जाते हैं तब you might end up seeing a corrective phase in the market. As you can see over here,
इनफैक्ट यहाँ पर थोड़ा डाइवर्जेंस बना, but yes, they were still extremely short and we ended up seeing a correction. And जब दोनों ही FII और क्लाइंट ये दोनों ही एक साथ ही एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं, दैट इज इवन मोर सिग्निफिकेंट सिग्नल. जैसे कि इसको अगर मैं करूँ FII इंडेक्स पोजीशन, तो अगर आप ये देख सकते हो कि ये भी एक्सट्रीमली शॉर्ट है, ये भी एक्सट्रीमली लॉन्ग है, ठीक है. सो दैट्स वेयर यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल. एंड यहाँ पर वी एंडेड अप सीइंग अ करेक्शन. सो देयर वाज, सी ये वाले फेज में वी डिड नॉट सी एक्सट्रीम, बट इनफैक्ट इवन इन दिस फेज इट एंडेड अप बिकमिंग एक्सट्रीम. एंड वाइल वी नो कि ये मार्केट साइडवेज हो गया था, बट वी ऑल नो कि इंटरनली ब्रेथ कैसा हो गया था. इनफैक्ट इन दिस फेज मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स फेल बाय 7 to 10%. ओके, तो अंदर ही अंदर स्टॉक स्पेसिफिक तो बहुत सारा धुलाई हुआ ही था ये पूरे फेज में. सो अगेन व्हाट हैपेंस इज दैट कि ये सारे चीजों से आपको एटलीस्ट यू वोंट फॉल इनटू दैट पिटफॉल कि यहाँ पर जाके, बिकॉज ये जिस तरह से अपमूव आ रहा था स्टेट इलेक्शन के बाद, it was consistently rising higher and there was FOMO amongst people, but eventually what ended up happening was a sideways consolidation for almost 2 to 3 months. And this was the phase जहाँ पे बहुत सारे stocks भी 10-20% गिरे भी. So of course ये वाले phase में there were stocks जहाँ पे we saw 20-30% rally as well. But that's where, I mean, that is the point that we will cover in the heat maps. ठीक है, जिससे कि आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ फाइंड करने को बहुत सारा आसानी होगा. दैट इज बिकॉज द नेक्स्ट स्टेप इज दैट कि जब आपने ये इंडेक्स अंडरस्टैंड कर लिए कि यहाँ पे टॉप्स या बॉटम्स बनेगा, देन यू वुड वांट टू नो कि कौन से स्टॉक्स या सेक्टर्स अच्छा करेंगे. एंड दैट इज द सेकेंड स्टेप. ओके, दैट वी विल कवर इट इन द नेक्स्ट वेबिनार. But yes, when we look at it in terms of medium term indicator, client or FIIs, they play a very important role. And आप ये पूरा डेटा स्कैन करके देख सकते हो. हमारे पास ऑलमोस्ट 2012 से ये पूरा डेटा है. And you will see these patterns repeating again and again and again. And that's where it will make, I mean, it will be extremely helpful for you all to understand this data, because ये सारा डेटा आपको एक और वैलिडेशन देगा ओवर एंड अबव व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ. ओके, एंड दैट विल सॉर्ट ऑफ हेल्प यू. एंड आई कैन अश्योर यू, मतलब ये हम लोग इंडिया चार्ट्स और मैं खुद में पर्सनली आई एम ट्रैकिंग इट सिंस 2016, एवर सिंस आई गॉट इनटू द मार्केट प्रोफेशनली. ओके, जहाँ पे हम ये सारे डेटा हम एनालाइज करते थे टू अंडरस्टैंड द मार्केट ट्रेंड्स. So the good part is that we have made all this data available in a much more simpler format in Strike, and it can massively help you to understand the market trends and be a contrarian, especially at the times when there is a lot of greed and fear that is there in the market. The next one is actually the 20-day AD ratio. सो ये भी हम हमारा एक यूनिक कैलकुलेशन है. सो ओवर ईयर यू डोंट नीड टू बॉदर विद द नंबर ओवर ईयर, बिकॉज ये प्योरली कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से है. वो ऑल यू हैव टू लुक एट इट इज के यहाँ पे ये सारे पैटर्न्स कैसे बन रहे हैं. ओके, एंड जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये वाला फेज था व्हेन द क्लाइंट्स एंड ऑल दे वर एक्सट्रीमली लॉन्ग, I mean, extremely short, FIIs were extremely long, and ये पूरे phase में you could see that the market breadth was continuously deteriorating, and it was only around this point, I think, that's where a major bottom occurred. Sorry, this point, and that's where after that the breadth started picking up. So, understanding this data will also, make a lot of difference to your analysis. तो अब जैसे कि मैंने पहले भी कहा, if one or more indicators they confirm that, then it's even more sign that you have to take note of that. And there was this one more indicator which I just forgot to mention, which is client plus FII. Now ये हम ऐसे ही randomly हमने डेटा जब हम एनालाइज कर रहे थे तब हमने देखा कि जब भी क्लाइंट और FII का पोजीशन
अगर हम दोनों को नेट करें, मतलब दैट इज बेसिकली क्लाइंट का पोजीशन प्लस एफआईएस का पोजीशन, एंड व्हेन इट रीचेस टू से 1,30,000 से लेके 2,20,000 कॉन्ट्रैक्ट, that's where you can end up getting meaningful tops, as you can see over here. In fact, in this top, we had actually put out a report on India charts as well. Okay, when we do clients plus FIS positioning, it looks like it is reaching an extreme, and we may end up seeing a correction, and that is what eventually happened. In fact, ये हमने इसलिए डिस्कवर किया था बिकॉज अगर हम 2018 वाला भी फेज देखें, ठीक है, यहाँ पर भी वी एंडेड अप सीइंग समथिंग वेरी सिमिलर ओवर हियर एज वेल. सॉरी, दिस वन. सो इनफैक्ट उसमें ये साइडवेज करेक्शन हो गया था, ये टॉप पे ये सिग्नल मिला था. एंड सिमिलर इज ट्रू कि जब वो एक्सट्रीमली शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है, दैट्स वेयर यू एंड अप गेटिंग वेरी बिग बॉटम्स एज वेल. नाउ लाइक आई टोल्ड यू, मतलब इसमें जब ये एक्सट्रीम पे आ जाता है, इट इज नॉट दैट कि आप कल ही उठ के बाय करो, ओके, बट यू हैव टू वेट फॉर द साइंस ऑफ रिवर्सल के वो आर्ली में एटलीस्ट वो एवरेजेस के ऊपर ट्रेड होना चालू हो एंड सो ऑन. सो दैट विल बी द पॉइंट of confirmation कि हाँ अभी market is turning around and you need to be on that particular side, and that's where things like RMI and all will help you immensely. And that again, like I told you, we will cover it in the next session, in the coming sessions basically. But yes, I mean, even if you look at it over here as well, okay, so that's where this was a sign of a very big bottom. This ended up becoming a big bottom, and यहाँ पर हमें अब तक सिग्नल्स नहीं मिले. बट ये हमने नोटिस किया था कि क्लाइंट प्लस एफआईआईज बहुत ऐसा एकदम फ्रीक्वेंट नहीं देते हैं सिग्नल्स, ओके, इट डू टेक एंड अप टेकिंग सम टाइम, बट जब भी ये देते हैं तब it ends up becoming a very important signal, and you have to end up respecting that. So now, again, the thing that we will come back to is that कि जब ये चारों एक ही साथ आपको टॉप या बॉटम बताते हैं, that's where you have to be extremely careful, okay? मतलब बिकॉज जो ये जब एक्सट्रीम पे आ जाते हैं तब जो भी प्रिवेलिंग ट्रेंड है वो रिवर्स होने का चांसेस बहुत हाई हो जाता है. तो नाउ लेट मी प्लॉट इट. सो अगर मैंने ये किया, फिर क्लाइंट FII इंडेक्स, एंड इसको मैंने 20-day AD रेशियो के साथ भी मैंने मिला दिया, ठीक है. when these sort of reading comes to an extreme, then you have to be very careful. Like you can see over here, FIIs plus client plus FIIs बता रहे थे कि ओवरसोल्ड कंडीशन है. और जैसे कि मैंने कहा था कि क्लाइंट हमेशा बॉटम्स पे एक्सट्रीम लॉन्ग होते हैं, FIIs बॉटम पे एक्सट्रीम शॉर्ट होते हैं, एंड यू कुड सी दैट द ब्रेथ इज ऑल्सो ऑन द डाउन साइड. ओके, ब्रेथ तो आपको दिख रहा था कि काफी टाइम से खराब था, बट इसका पोजिशनिंग वाइज ये खाली यहाँ पर जाके बॉटम बना, and that's where it ended up becoming a 2 to 3 months kind of rally, which eventually played out in the Nifty index. In fact, even in this case, and it was somewhere over here, so that's where again it ended up becoming a major bottom. So like I told you, अगर सारे इंडिकेटर्स एक ही साथ कंफर्म कर रहे हैं देन तो नथिंग लाइक इट, बट इवन अगर 2 या 3 इंडिकेटर भी कंफर्म कर रहे हैं कि यहाँ पे बॉटम बन सकता है या टॉप बन सकता है, देन यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ दैट, बिकॉज दीज माइट एंड अप बिकमिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सिग्नल्स टू यू, विच यू मे वांट टू टेक अ नोट ऑफ. एंड बिकॉज क्या होता है कि अगर आप मार्केट में तब भी कमा सकते हो जब आप लोगों से हटके सोच सकते हो, या आप में वो करेज होगा कि आप कॉन्ट्रेरियन भी बन सकते हो, राइट? सो दैट्स वेयर दीज ऑल डेटा पॉइंट्स आर इमोशनलेस, एंड जब भी यहाँ पर आपको कोई सिग्नल्स मिलते हैं, and if you act on that, I can tell you that
you will end up making, good money with this. And not only that, it will actually boost your confidence, because then, you can trade with lot more confidence. And maybe, you might want to bet more also in such kind of position to make things count for you, right? Now, when we move on to the last part, that is the long term one. Now, this one is little tricky, because क्या होता है कि ये जो indicators है, ये long या ये एक्सट्रीम में भी पहुंच जाते हैं, तो इट इज नॉट दैट कि एक्सट्रीम में पहुंच के अगले दिन ही गिर जाएंगे. ओके, समटाइम्स इट माइट टेक 3 months 6 months ऑल्सो टू प्ले आउट. बट ऑल व्हाट यू नो इज दैट के जब ये एक्सट्रीम्स में कोई भी आएंगे, ओके, स्पेशली ऑन द अपसाइड, you might not want to commit hell lot of money at that point of time. Okay, so yes, so when we move to the long term indicators, so now this would be the last part, and later on we'll open the floor for questions. So इसमें हम जो देखते हैं, that is volume put call ratio, 40-day ED ratio, और जैसा मैंने कहा कि 2020 के बाद स्पेशली DIIs का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है मार्केट में, and their positions are also keenly tracked. And then it is the future OI by index. So let me go and explain you each one of them. So the first one would be the DII positioning. DII भी basically client जैसे ही behave करते हैं, which means that जब market top पे रहेगा तब they will be extremely short. Okay, and at the same time जब market में correction रहेगा, okay, and it might be near the bottom, वो time पे they will be extremely long, right? You can see over here in COVID as well, they were long. यहाँ पर भी tax break आने के पहले they were long. ठीक है, in fact in this correction they were long, and you will see that at the tops, in fact over here, so which is over here. ठीक है, इनमें भी कैसा है कि इनमें you won't see them reaching an extreme very quickly, but whenever they do, I mean that is a sign that there can be a big turn that can happen, and you have to make a note of that. Okay, so जैसे कि मैंने कहा कि DII सिमिलर टू क्लाइंट्स है, बट उनका पोजिशनिंग जब जब भी एक्सट्रीम आता है, इट कैन बी एन इंडिकेशन ऑफ अ मीडियम और अ लॉन्ग टर्म टॉप एंड बॉटम एज वेल. Then the next one basically comes to volume put call ratio, okay, which you can see it over here, put call ratio volume 14 mm. So इसमें क्या होता है कि the lines that you see, ठीक है, इसमें हम बेसिकली यही प्लॉट कर रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ पुट एंड वॉल्यूम ऑफ कॉल क्या है, एंड दिस इज फॉर द ओवरऑल मार्केट. ओके, दिस इज नॉट जस्ट फॉर इंडेक्स बट फॉर ओवरऑल मार्केट. तो जब जब भी पुट्स में वॉल्यूम हाई हो जाता है, ठीक है, सो यू विल सी दैट दिस रेशियो एट हायर लेवल्स, एंड जब जब भी कॉल में वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है, तब यू विल सी दैट दिस रेशियो इज एट द बॉटम. ओके, तो एक्चुअली अगर आप देखें तो प्री कोविड, okay, you would see that this range used to be a little different. मतलब कि जब जब भी ये 0.74 ऐसे आ जाता था, तब you might get very good bottoms in the market. Okay, and at the same time जब आप ये देखोगे कि ये रेशियो काफी नीचे आ गया 0.3 के आसपास, I mean 0.43 के आसपास, तब you will end up seeing tops in the market. So it was somewhere over here, I mean after the election, where यहाँ पे continuously the breadth was deteriorating, but yes, I mean यहाँ पर ये signal आया था. Then you can see over here, okay, एंड यहाँ पे जब जब भी आप देखोगे कि अगर बॉटम के आसपास आता था, विच इज समवेयर ओवर ईयर, ओके, तो यहाँ पे ये रेशियो हाई हो जाता था. नाउ आफ्टर कोविड एक्चुअली ये पूरा चेंज हो गया. नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस हैज हैपेंड, बट देयर सीम्स टू हैव बीन अ न्यू रेंज दैट हैज बीन डेवलप्ड फॉर नाउ, विच मीन्स कि जब जब भी ये रेशियो एक्चुअली में 0.79 के आसपास आ जाता है, that's where we end up getting a major bottom,
like you see over here, here, okay, in fact over here as well. एंड जब जब भी ये रेशियो यहाँ पे 0.6 के आसपास आ जाता है, तब तब हमें एटलीस्ट टॉप दिखते हैं, विच में नॉट बी वेरी सिग्निफिकेंट बट टॉप्स दिखते हैं. आइडियली ये जब यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि आपने 2021 में भी 22 में भी देखा था, जब ये यहाँ पर आ गया था, ओके, दैट्स वेयर वी एंडेड अप गेटिंग अ मीनिंगफुल टॉप, एंड देन आफ्टर we saw this corrective phase. In fact, even in 2018, जब small and mid caps यहाँ पे peak हुए, that's where we ended up getting a meaningful top. So yes, I mean, taking note of this is important, because जब भी ये नीचे आ जाता है, that tells you that लोग कॉल में बहुत काम कर रहे हैं, and that will sort of tell you that there is a lot of complacency in the market, and you might not want to commit big money, especially when we are in this phase, because यहाँ से जब भी होता है, you can see that we have ended up getting a medium term correction, which can be meaningful, like a double digit sort of correction. Then the next one is the future OI by index. Okay, यहाँ पे basically हम क्या गेज करते हैं कि फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट इंडेक्स के रिलेटिव कितना है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्चुअली खाली फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट भी प्लॉट करके देखा है. ओके, एंड व्हाट हैपेंस इज दैट कि जब भी ये मतलब एज एंड व्हेन मार्केट कीप इंक्रीजिंग, द फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट विल कीप इंक्रीजिंग, राइट? सो दिस मे नॉट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड प्रिसाइजली कि सेंटिमेंट कैसा है, तो इसके वजह से हम उसे इंडेक्स के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो उससे हमें एक रेंज मिल जाता है. And actually, if you see prior to 2024, okay, whenever this ratio used to come at 1700 kind of levels, the market would peak. यहाँ पर ये 2008 का हुआ था, and then we ended up getting a big correction. ये भी ऐसा है ना कि you won't see this indicator giving signals वेरी ऑफन. ये 5 या 6 साल में एक बार ये इंडिकेशन देगा, बट वेन एवर थिंग्स टर्न अराउंड आफ्टर दैट, that ends up becoming a very big correction point. Even you can see that ये जो इंडिकेटर ने जब दिया था तब ये 2018 में था, एंड यहाँ पर निफ्टी में हमें डाइवर्जेंस लगेगा, राइट? बट व्हेन यू सी द मिड कैप इंडेक्स, सो मिड कैप इंडेक्स एक्चुअली 2018 में ही पीक हो गया था, which was over year, okay, at this point, January 2018, and this, sorry, yeah, and this if you see, तो ये भी Jan 2018 के आसपास पीक हो गया था, right? And after that we ended up seeing a big 2-3 year kind of corrective phase. Even here it ended up, I think, being 1.5 year kind of corrective phase. And अभी the problem is that ये इंडिकेटर वापस यही जोन में आ रहा है, which is sort of telling you that people are doing extreme margin trading and futures trading and so on, and that's where we know that margin eventually have a lot of cascading impact, which means कि जब भी अगर सपोज मार्केट में यहाँ पे करेक्शन आएगा, then it will have a cascading impact, like लोगों को मार्जिन कॉल्स आएगा, तो उसके वजह से दे माइट हैव टू एंड अप सेलिंग द पोर्टफोलियो, एंड पोर्टफोलियो को जब ब्रोकर लोग मार्केट पे सेल करते हैं, देन दैट्स वेयर वी एंड अप सीइंग अ मैसिव correction playing out. So that's where probably if you want to commit long term money, okay, this might not be a good time. That is what this indicator would be telling you. But like I told you, यहाँ पर हमें लीड लैग ये सब कुछ फैक्टर इन करना रहता है. ओके, so that's where if you use the combination of other factors as well for the long term investing, so that's where it will help you meaningfully in terms of timing, right? So futures OI by index is one of them, and the last one that we would come to is basically the 40-day AD ratio. तो इसे हम क्या करते हैं, ये जो एडी रेशियो हम जो 20 डे वाला मैं बताया था, तो वो हम रॉ फिगर को 20 डे का एवरेज ले लेते हैं, एंड यहाँ पे हम 40 डे का एवरेज ले लेते हैं, राइट? तो जब हम 40 डे का एवरेज ले लेते हैं, तो दैट्स वेयर वी एंड अप सीइंग द रेंज बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा.
right? Again, over here, figure is not important. It is very important to know how things are playing out. मतलब कि अगर ये टॉप पे आ रहा है तो मार्केट का सिचुएशन कैसा है, ये बॉटम पे आ रहा है तो मार्केट का सिचुएशन कैसा है. And like I told you, when one or more indicators, they all confirm in the overbought or oversold zone or whatever it is, then it becomes an extremely important data point to act on. So if I have to combine everything, so it is vol PCR, it is future OI by, okay, and the last one would be HDIs. तो अब हम देखें यहाँ पर, राइट, यहाँ पे ब्रेथ एकदम खराब हो गया था, ओके, एंड इट हैड कम टू द ओवरसोल्ड जोन. This DI's positioning was at its peak. The wall PCR was also at the highest point, and that's where it ended up becoming a good signal to invest, from a medium term perspective, at least medium term to long term perspective. Then it was even in this case at COVID. And mind you, ये आप डेटा अगर आप यहाँ से देखते तो this was the oversold zone, right? It was only after 2022 that this entire range has changed. But otherwise, at this point of time, this was an overbought reading. And over here also, you can see that the future OI by index was actually less, which was telling you that people were speculating less. And that is always a good sign. So in future OI by index, the way to read is कि जब ये high रहता है तब you have to be careful because लोग बहुत ही margin trading और सब कर रहे हैं, and margin trading usually doesn't end up well, right? And typically जब ये ratio actually नीचे रहता है, it tells you that people are very light. जो भी सब कुछ हो रहा है वो cash में बहुत ज़्यादा हो रहा है, futures में इतना नहीं हो रहा है, and that is a good sign that there is no froth in the market, right? And that's where you ended up seeing also DIs, extremely long at this point, and that's where you ended up getting a big bull run after 2020. So like I told you, if one or many indicators are confirming all at the same time, it is a point where you have to take a note of it, and you have to make it count, from your perspective, from your portfolio and investment perspective. So I think with that, I'm done with the presentation part. If there are any questions now, I'm happy to take it and clarify it. Thanks, Jay. And those who are interested can raise your hands. We'll allow you to unmute. You can start asking the questions. Okay, Nishit Joshi. Hello, good morning, sir. Yeah, Good hi. morning. Good morning. Sir, I wanted to ask that instead of this Nifty, can we apply all these short, medium, and long-term indicators to CNX 500? Yes, you can, because वो भी एक broad index है. So yes, you can apply it, but actually हमने ना यहाँ पर चार्ट में खाली निफ्टी दिया है. Maybe I think वो चेंज नहीं होता है जय, वो चेंज नहीं होता है. Yeah, I know. Maybe we can think of it of giving, broad index over here or something like that at a future date. I mean, if we Yes, get... sir, because as you know, since last 2-3 days, the Nifty has rallied a lot, but the broader markets are underperforming. So Right. it can be more helpful. Yes, I understand. I think maybe we can give an option of, viewing the chart that way. We can consider that. And sir, my second question was when we can expect any tentative timeline for the RRG chart to launch? Next week, sir. Okay, sir. Thank you. Yeah, almost done. UAT is done. Testing is done. Next week we should be launching. Okay, thank you very much. Thank you. Okay, Nirmal Rastogi. Hello. Hello. Yeah, Jay, thanks for a nice presentation. Thank you. Just wanted to know that raised a ticket also, but can I ask something different from this? Like when we go to the charts, there are two setups. One is the RMI setup and one is the strike valuation setup. Right. So when I go to the strike valuation setup, and particularly when I go to the
indicator PYE or earnings, if you can Hmm. open that for Nifty index, the data is not changing. It is only showing for 1 year. When I click on 3 year or 5 year, it हाँ is नहीं not नहीं coming. हाँ एक सेकेंड ना I'll check it but I think अगर आप so when you actually change it from here there is a bug that we are already working on but if you see oh Yeah, okay if I go to the earnings, like in the valuation part, apart from chart, then it is yeah able to show. But yeah the idea is to see along with the price action. yes definitely no I think this I had just checked it last time maybe for index it is creating a problem but for stock I mean I had seen stocks so I didn't find any issue over there I think in index it is probably happening we'll look into this Yeah. And I had requested that this Nifty next 50 may also be included because it is also an important index. right yeah It's we have performing to very well. Nifty correct has been underperforming for quite some time the last rally. yeah This Nifty next 50, so kindly include that also. done so yes I think we'll take your both the requests so this we will immediately fix it Yeah. the Nifty 51 we'll bring it in the thing in the Right. futures model Thank you. yeah Thanks a lot. Okay, next one is MS. Hello. Yeah. So I MS just you want will to have to ask that. speak a little louder I can't hear you Okay, so I want to ask that, for an example, if you are trading in index, right, futures, yeah but I read somewhere that trading is a game of probability. For an example, indicators are not always, you cannot rely on indicators all the time. For right example, so see these are all additional data points right I mean if you are using RSI, okay, what you do is that you overlay more and more things, right, to avoid that pitfall. So sentiment indicators are one of them because see when everything is going down, okay, okay, वो RSI भी आपको oversold बताएगा, सब कुछ बताएगा, okay. But what happens is that positioning of people also becomes an extremely important factor to determine, right? Because सब लोग एक ही direction में कर रहे हैं, तो उल्टा होने का chances are very high, right? And that is what sort of sentiment indicators helps to convey to you through those things. okay. And See, one more I'll tell thing. you very honestly. I'll tell you very honestly. ये जब decline था ना, okay. So everyone, I mean, there were a couple of friends in my circle. They were telling, "Oh, this is a trend line break. Everything will fall apart and Correct, so on." Right? correct. And what you see over here is daily swing oversold zone. Okay. And this, mind you, this is on record also in India charts, where we end up, highlighting such setups. Okay. Average swing, it is in oversold. Okay. If you see PCR ratio, this was also oversold. Munchun, please don't do that. Okay. So yeah, so this now when you see that the combination of three, these are all indicating me oversold zones, right? MS. So what happens is that this becomes then a high probability trade to capture. Okay. And one more thing, for an example, if the market makes bottom, like for a daily indicator, like daily swing, the bottom is like between 10 and 20, somewhere in Yeah, that range. yeah. Uh, it could even fall further, like if you Yes, watch a it could fall. if you watch some broker's webinar, they say when, it could even go to 21,000 or I don't know, Yes. or something like So this. absolutely agree to that, and that's where I made a And point that suddenly changes, the sentiment suddenly changes, and then based on some technical candles, like yeah, bullish, exactly. So MSC, bullish candles, what we do over here is that we and do the combination. it retests some supports. So it differs from technical like supports, support to like technical support
support and resistance, and then the indicators, the both play a part, I think. So it is a combination, MS. I mean, you cannot just rely on this. Like I told you, I mean, at this decline, okay, the indicator had actually on that fallen to 3 on that day, okay, when this decline was happening during the day. Okay. So what we, like I mentioned earlier as well, what we need is then के अगर ये oversold zones में आ गए, then you would want Nifty to make a higher high and trade above the hourly averages at least, to know that a reversal can be in place, because like you said it can keep falling. In fact, COVID जैसा period था, that was an outlier. Okay. So yes, I mean, ये यहाँ पर ये swing यहाँ पर ही oversold हो गया था. Okay. फिर यहाँ से थोड़ा bounce आया, and this entire decline, this was trading at a very low single digit. So, I mean, when there are, such black swan events and so on, so that time this may not work out that well, but at least you would know, okay, now see over here, if you see there is divergence that is there, this is there, okay, and this has become extremely oversold, जो पहले कभी भी नहीं हुआ था, right? That sort of tells you कि यहाँ पे there was a massive call writing. In fact, over here, if you see, if I had only this much data, okay, and I can see कि ये lowest level पे आ गए, and what has typically happened when you have ended up seeing such kind of correction, like over here as well, you ended up seeing divergence, and then there was a very big up move. Okay, over here also you can see that the up move continued. So all these data points sort of gives you an insight. It is not a holy grail कि ये oversold आ गया तो कल ही जाके buy कर लो. It doesn't work that way, but it will help you to objectively think about things. I don't know if that makes sense to you. No, I got your point. Yeah. And sir, about the sentiment, I would like to ask. Yeah. For an example, if you read Economic Times, there are different technical analysis, different perspective on market. If you read something else, there is a different perspective. So there are sentiment indicators. So I did not understand the question. So which one to rely on? I don't know. See, what we are doing, we have mentioned that. Okay, I cannot tell what the other people are doing, right? Okay. So this is what we have been doing for analysis, for our own analysis. Okay, everything is there in India Charts portal as well. You can see, those things, and that is how we operate, and we find it useful in timing tops and bottoms. Right. Okay, next up is Ashish. All right. Hi. Hi. Thanks Jay, for the presentation. It is really good. So I have like 2 or 3 questions, but they are short questions rather than the long ones. Sure. तो सबसे पहले तो I think आपने जब daily momentum swing खोला था, तो if you open that daily momentum swing indicators on 16th of November 2023, I think momentum swing में हाँ 16th of November 2023 हाँ 16th I ये think तीनों करने हाँ. पड़ेंगे तीन है ना तीन थे I think there are 3 indicators, right? Okay, you want me to put all the 3? Average and daily I think at least अब आगे Yeah. तो अगर आप देखें 16th of November को I think आ गए ना आप तो हाँ ये रहा ये वाले. हाँ 16th of November को अगर हम देखें तो और मे बी समवेयर अराउंड दैट लाइन हाँ तो आप देखेंगे ये नीचे है व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी के यहीं पे 16th के आगे पीछे डेली एवरेज दोनों नीचे थे तो विच मींस वी आर थिंकिंग के नीचे जाएगा बट एक्चुअली में प्राइस जो था इंडेक्स का डाइवर्जेंस था. So one thing I had mentioned very clearly at the start, when these two indicators are at high, it tells you two possibility, या तो consolidate होगा या गिरेगा. Okay. And this then helps you to time, especially from a short-term trading perspective. Now see, these two both came at the oversold zone over here, right? What followed by that was 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 days of consolidation. If you are a weekly option trader, you would have lost all your money, right? Thinking कि ये तो ऊपर ही जाएगा.
So Okay, that's yeah. where their relevance comes from 5 day to 10 day perspective. आई थिंक बिकॉज आपने अभी कैंडलस्टिक चार्ट कर दिया तो ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कंसोलिडेशन है, लेकिन लाइन Exactly. चार्ट रहा था कि हाँ ऊपर जा रहा I है, mean this लेकिन would be very divergence- underappreciated क्या ऐसे लगे कि ऊपर जा रहा है, but it is हम्म, not that. I mean when you look at the candlesticks chart, that's where you will realize कि कंसोलिडेशन हो रहा है। हाँ पर अगर हम मान लेते कि ये ऊपर जा रहा था विच इज अ डाइवर्जेंस, हाँ देन दैट मीन्स द एक्शन वी कैन टेक इज, मतलब डाइवर्जेंस का मैं आई एम स्टिल नॉट वेरी क्लियर। डाइवर्जेंस का मतलब है उल्टा हो रहा है, लेकिन उस पे हम क्या, वी स्टॉप द ट्रेड, वी ट्रेड और वी डोंट ट्रेड, व्हाट डू वी डू? So divergence पे ये रहेगा कि if you are long, okay, if you are heavily long at this point of time, you might want to reconsider your strategy. And especially ये मान लो कि ये अगर आपको एक्सपायरी का जस्ट 2 हफ्ते पहले ये सिग्नल आया, तो you might not want to venture in the current expiry. ओके At least that is one thing that you can do from this. ओके, ठीक है। Because और उसमें क्या होता है कि जो लास्ट 1 या 2 हफ्ता रहता है उसमें योर प्रीमियम विल इरोड सिग्निफिकेंटली। मेक सेंस, मेक सेंस। और दूसरा आपने जो चार्ट खोला था 9 MA PCR ओपन इंटरेस्ट, या तो आई थिंक इट्स वैलिड फॉर ऑल दोज थिंग्स व्हिच यू हैव शोन। तो आप जो शो कर रहे हैं NSE इंडेक्स के स्टॉक्स है, राइट? बट इफ माय पोजीशन इज आउटसाइड NSE इंडेक्स स्टॉक, तो दिस होल थिंग इज नॉट रेलेवेंट फॉर मी इन दैट केस, इजंट इट? नहीं, so see, again what I mentioned was that these are all top down approach, ठीक है? अगर आप ये now you tell me one thing कि अगर मार्केट गिरते जाएगा what is the probability के स्टॉक्स बढ़ते ही जाएंगे? लो प्रोबेबिलिटी। Very low, right? So what you do is that with this you try to filter it out. अभी जब मेरे को लग रहा है कि मार्केट ऐसे पोजीशन पे आ गए जहां पे करेक्शन होगा या गिर सकता है, so what I will do is that I won't go heavily long, especially on those which are underperforming very badly, right? ओके So this will sort of help you to filter out those things. See, ओके like I mentioned in the PPT also, this is more like a top-down approach. What you do is that first you understand what the index is doing. Once you understand what the index is doing, next step is कि वो आप stocks को apply करो, and that's where the other part comes into play, which we will be obviously covering in the next 3 webinars. कि how are the different approaches that you can take वो time पे. ठीक है। आई थिंक एंड द लास्ट थिंग आई हैव इज, दो चीज़ें हैं लेकिन अगेन शॉर्ट। अगर जैसे आप अभी इंडेक्स की बात करें तो मैं इंडेक्स तो डायरेक्टली खरीद नहीं सकता, तो और ये से कि मैं एक, मान लो मैंने एक लॉन्ग पोजीशन लेनी है रीडिंग ऑन दीज चार्ट्स, तो अब मेरे को एक लॉन्ग पोजीशन लेनी है, पर एज सच मैं इंडेक्स में एक एक स्टॉक नहीं खरीदूँ। अप्रोच इज मैं इंडेक्स का एक ETF खरीद लूँ एंड दैट इज माई पोजीशन रादर देन एक्चुअली बाइंग। देयर इज नो वे आई कैन बाई इंडेक्स ना, मैं तो फीचर खरीद सकता हूँ विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड। Yeah, you can do futures, you can do options, or you नहीं, can अगर मैं do फीचर्स ETFs. एंड ऑप्शंस को छोड़ दूं एंड आई जस्ट वांट टू बाय इंडेक्स, देन ओनली ऑप्शन इज मैं इंडेक्स का एक ETF खरीदूं। Yeah, right. तो फिर तो वही ऑप्शन होगा. But then you might want to be more interested in the medium term moves, ना? You might यस, not just want to यस, capture ये 2% because एक मतलब 0.5 तो ब्रोकरेज लग जाएगा वो सब टैक्स वैक्स सब मिला के. हाँ जी। So it might not worth your time. I got the point. अब last thing, if you pull up the chart for ICIL, maybe the valuation screen या RMI screener जो उसका चार्ट है, Okay. चार्ट Okay. चार्ट चार्ट यस, Yeah. इसको वीकली अगर आप करेंगे और पिछले 1 साल का टाइम फ्रेम देखेंगे, Right. तो द क्वेश्चन, एंड इट्स नॉट स्पेसिफिक टू दिस, तो दिस चार्ट लुक्स लाइक maybe little bit more clean or not clean in the sense के ये RMI कुछ इंडिकेशन देता है, लेकिन ये बार बार 40-day EMA के नीचे क्लोज होता है, राइट? इफ आई सी द गैप से फ्रॉम 20 इनफैक्ट 40 डे ये है, वो 40 डे तोड़ता ही नहीं है. हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर आप जून 2023 के पहले वाला जहाँ पे कंसोलिडेशन वाला फेज है, तो हाँ काफी टाइम पे, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इट्स नॉट स्पेसिफिक टू ICIL बट माय क्वेश्चन इज जेनरिक, कि अगर मैं ऐसा कोई चार्ट उठाता हूँ और उसमें देखता हाँ हूँ कि वो चार्ट जो है वो क्लीन नहीं है, क्लीन का मतलब वो बार बार 40-day EMA तोड़ता रहता है हर 3-4 हफ्ते बाद, वर्सेस हाँ मैं ऐसा स्टॉक उठाता हूँ जिसमें चार्ट क्लीन है जहां पे वो 40-day EMA जनरली नहीं तोड़ता है, देन राइट माय स्ट्रेटजी शुड बी मैं ऐसे चार्ट से ऐसे चीजें पिक करूं जहां पे चार्ट इज मोर क्लीन, कि 40-day राइट EMA ज्यादा जल्दी नहीं तोड़ता है, दैट इज अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग अ ट्रेड इनटू दैट एग्जैक्टली स्टॉक। करेक्ट. ओके,
ठीक है, बस आई थिंक दैट्स ऑल। वन Yeah. लास्ट थिंग विच इज अगेन नॉट स्पेसिफिक टू स्टॉक्स, इसमें इज जैसे मैंने कुछ मार्किंग की है स्टॉक पे, एंडो काउंट पे, तो इज देयर अ वे आई कैन सेव दिस चार्ट विद इन दिस स्क्रीन, या मेरे को डाउनलोड ही करना पड़ता है? मैंने मार्किंग करके इमेज डाउनलोड कर लिया तो मेरे को हर नहीं, जैसे एक्चुअली ना क्या होगा, हाँ, ये एक्चुअली जो आरएमआई में है ना, वहां पे वी आर ट्राइंग टू सेव इट। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे ना ये सेव होता है कि नहीं। एक सेकेंड ना, आई जस्ट ट्राई इट। बट इसमें ना जो मेन जो आपका जो ये वाला स्क्रीन है ना, इसमें तो सेविंग हैपेंस। तो आप सेव मतलब यहाँ पे ड्रॉप डाउन में कोने हाँ पे सेव मतलब, कर। हाँ, यहाँ पे ये इंटरैक्टिव चार्ट पे किया ना आपने, एंड यू टाइप एनीथिंग, ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया उसको। बट वो सेव इंडो अकाउंट का अलग होगा, टीसीएस का अलग होगा, इन्फोसिस का अलग होगा, जब मैं नहीं उसके नहीं चार्ट में। नहीं, इनफैक्ट वो सबका सेम हो जाएगा। जैसे कि नाउ सी, आई एम डूइंग ओवर योर आरएसआई, ओके, आरएसआई प्लस ट्रेंड लाइन प्लस स्टडीज, आई डू दिस वे, ओके। अभी इसमें ना मैंने आपको मतलब आई हैव एडेड आरएसआई ओवर योर, ओके, आई हैव मेड द ट्रेंड लाइन स्टडीज ओवर योर, सॉरी, कुछ भी लगा दें आप, हाँ कोई हाँ, चक्कर नहीं होगा। ओके, हाँ जी। एंड आई हैव सेव दिस, करेक्ट। अब हम्म मैं इधर में कहीं पर भी जाके आऊंगा, ओके, आई आई रिमूव दिस Yes. ICIL, आई गो बैक, आई गो टू चार्ट्स, ओके, तो योर स्टडीज विल बी देयर। मतलब ये स्पेसिफिक टू स्टॉक नहीं होगा ना, तो सबको एप्लीकेबल हो जाएगा, एंड देयर इज नो वे टू स्पेसिफिकली स्टॉक के लिए, फिर तो मेरे को डाउनलोड करना पड़ेगा इमेज। नहीं, तो अगर आपको स्टॉक का करना है तो यू डू इट फॉर स्टॉक। हाँ नहीं, जैसे आपने इसमें आरएसआई करा, मेरे को बॉलिंजर बैंड देखना है, लेकिन फिर वो बॉलिंजर बैंड अगर मैं सेव कर दूंगा तो सभी के लिए हो जाएगा, मतलब मुझे कुछ का बॉलिंजर बैंड देखना है, कुछ का आरएसआई देखना है, तो इट्स हाँ, नॉट तो आपको इंडिविजुअलाइज्ड। एक्चुअली ये आप इंडिकेटर भी यूज कर सकते हो, इंडिकेटर टेम्पलेट, मतलब यहाँ पे आपने खाली ये कर दिया हाँ ओके, मेक सेंस। वैसे। सो दैट्स व्हाई वी हैव गिवन इट टू वेज। ये आपका पूरा मेन स्टडीज है, यहाँ पर आपको टेम्पलेट स्टडीज है, मतलब आपको ठीक खाली बॉलिंजर बैंड वाला ही टेम्पलेट चाहिए, तो ठीक है, आप थैंक ये यू थैंक करोगे। यू थैंक यू सो मच, हाँ लग गया पता, Yeah. थैंक यू। And one more thing, Ashish, you need to know that this is trading view. जैसा ट्रेडिंग व्यू वर्क होता है ना, इधर भी वैसा ही वर्क होता है. हाँ हाँ Okay. जी। Yes. So on the RMI indicator, we are unable to do because trading view doesn't allow us to save the charts एक्चुअली दैट because इज अ स्पेशलाइज्ड स्क्रीन ना। specialized screen, no? So they don't allow us. Okay, हाँ in the जी। software itself, it doesn't allow. So, but we are trying to work around. We'll make sure that even RMI can be plotted everywhere. Lot of request has come from the users, but we are trying our best to make sure that RMI can be plotted even on the dashboard and everywhere. We are working around it. ठीक है। और आरआरजी आप जो नेक्स्ट वीक रिलीज कर रहे हैं, आई एज्यूम उसके लिए अलग वेबिनार होगा, बिकॉज एक बार रिलीज कर दिया तो Yes, यूज in fact, Julius itself will be taking the webinar. He has assured us. ओह गुड, थैंक यू सो मच, Yes, ठीक है। Julius itself will be coming. It will be on a weird time because he stays in Netherlands. So we'll have to see work around the time and we'll be doing it. ठीक है जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। Thank you. Thank you. Okay, next up is Vaibhav. Hi. हेलो, Hello. या Yeah. So my question was on the medium term that time frame that we said. Yeah. Can there are it's in two parts. So can we apply different time frame? Because what we saw is just one day. So can we apply to weekly? So नहीं, मतलब सी, द रीजन व्हाई वी हैव डिसेबल्ड वीकली एंड मंथली इज बिकॉज वो आपको सब फ्राइडे या लास्ट मंथ का ही बताएगा। तो इन दैट प्रोसेस यू माइट एंड अप कैचिंग द शॉर्ट टर्म, आई मीन उसका, बिकॉज सी दिस एक्सट्रीम माइट हैव हैपेंड ऑन मंडे और ट्यूसडे, ओके। yeah. If you do weekly, then this will be gone. That's why purposely we have not kept it weekly, monthly, because then you might end up losing those highs and lows. Because if you My thing. want to capture it on the monthly chart, ठीक है, तो ये लास्ट मंथ पे होगा तो ही दिखेगा। Okay. My thinking over here was हाँ if we get the indications on a larger time frame, हाँ, then it might work out for a longer period of time. So that's all. नो नो नो, आई वुड डिसअग्री टू दैट, क्योंकि अगर वो शॉर्ट्स 23rd को है, ठीक है, तो वो मुझे लॉन्ग टर्म में क्या बताएगा। मतलब इफ आई डू मंथली चार्ट तो मुझे क्या, बिकॉज
See, this range what we have got now, we have got it from analyzing many previous this thing. Okay, peaks and bottoms. That's where we have, made these lines. And these are obviously dynamic as well. मतलब जब range change होता है, we end up changing the lines as well. Okay. But that's where then you have an option. See, when you normally also scroll it ना, तो आपको 10-12 महीने का तो दिख ही जाता है एक साथ. मतलब you might not want to even go to the monthly chart. And इसको आपको और थोड़ा बड़ा करना है, आप इसको साइड में कर दो तो और बड़ा हो जाएगा. So this captures everything in one screen ना. हाँ, this is 24 inch screen. वो शायद 14 इंच में प्रॉब्लम होगा, बट देन टू आपको थोड़ा भी आप लेफ्ट करोगे तो आपको दिख जाएगा वो. आई डोंट थिंक इट विल बी एन will point me right. So it's okay. Okay. Another thing, when you say extremes, be it the higher or the lower band, is there a particular range or a value for those extremes? So we have marked it over here ना. ये जो आपको दिखता है ना ऑरेंज में, these are the values for that particular point. So that range is an extreme, or yes, that we have identified it is an extreme looking at the past data. Okay. And can we apply all of this, all of the things that we have read? Apply all of these things as in? Vaibhav, you are on mute. We'll have to unmute. Yeah. Can you hear me now? Yeah. Can we apply this to stocks as well, rather than just index? So see, like I mentioned earlier as well, what we do is that ये हमारा ना पूरा market data है. Okay, I mean this is index data. So this will sort of help you to understand and give you a top-down approach. Okay, मतलब इससे आप ये अगर identify कर लोगे कि market peak में है या bottom पे है, तो then you can, I mean, then if you know directionally अगर market bullish जाने वाला है, right? So you would want to find bullish stocks after that. So this is like an additional layer that you are putting to your analysis. But then how do we certain stocks? That was my point. So that is where we'll come to the second point, right? कि ये हमको कैसे stocks और वो भी ढूंढने चाहिए. Okay, cool. So we'll come to that next webinar. Will a recording be available for this? Yeah. It will be available. So you will either get it on our Strike handle as well on Twitter, which is strike_IC. You can follow us over there. There will be a YouTube channel. There is a YouTube channel as well of ours. Then you will also get it in the software that is basically over here in webinars. Okay. Over here, when you hover webinars, you will get it over here. Okay, thank you. Yeah. Okay, Nirmal Rastogi. I think he asked the question, right? No. Acha, sorry. Yeah. Nirmal? Yeah. Hello, can you hear me? Yeah. Yeah. Hi, Jay. Yeah, I had this question. Like you said, in trading, it's not possible to say. Like here like for the sentiment indicators, when I draw the lines and mark it is not getting saved as of now. We are working on that. All the exercise of the hours put in is gone as a waste. One has to again start from again. I know. So kindly do something about it. Sure. Next week, we are working on that. We'll solve this. And another question I have about this RMI indicator. Yeah. Like a stock is in, let's say, is in downtrend, and now it is changing trend and moving towards uptrend. Right. So the signal, the RMI signal, will first appear on daily, then weekly, and then monthly. How will it obviously. Go? Like the lower the time frame, the earlier signal you will get. And when it goes the other way from turning around from top, it applies the same thing. The signal you will get it on the lower time frame first, then on the higher time frames. Yeah. So like we say that the broader time frame, the higher time frame should be bullish to take a long trade. Right. And the shorter time frame. So if I am choosing like weekly and daily, so
first it has come on daily and it has come now. One should wait till it comes on weekly, the RMI signal, then only one should go for Hey, trade. so this obviously we will explain in detail when we do Yeah. it on RMI, but the broader Okay. idea is के weekly में buy में रहना चाहिए या weekly में at least it should be trending higher and trading above the 20-week average, for example. Okay, because that's where it will Correct. tell you के strength है वो Right. stock में या उसमें. So then what you will do is के daily में कब नया signal आ रहा है, that's where you will focus on. Okay. Okay. You know, just to give So you one does not, but Yeah. like when it is changing the trend, so one does not wait for the signal to come on monthly. नहीं, see, As I'll soon give as you it- one yeah. example. I'll give you one Yeah, yeah. example. ये जो weekly है ना, you can see that it is trending higher on weekly, right? Now, Right. ये weekly में जो sell buy signal, so we always consider buy signal important below zero line. Okay? Correct. तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये वीकली पे तो आप रुकने जाओगे नया साइकिल के लिए, तो ये कब मिलेगा वी डोंट नो. करेक्ट. Right. तो व्हाट वी डू इज दैट वी एनालाइज के हाँ ये वीकली में तो ये अप ट्रेंड में है ना, सो देन इट Right. फॉर अप ट्रेंड में होने के लिए यू नो देयर आर 2-3 क्राइटेरियाज दैट वी वुड वांट, राइट, कि Yeah. ये हायर हाई हायर लो Above. बनाना चाहिए, जो डाउ थियरी से हमें पता चलता है, राइट. Right. ये 20 वीक एवरेज, आई मीन ये 20 वीक एवरेज के ऊपर है, वो हमें इससे पता चलता है, राइट. एंड देन व्हाट वी वुड वांट इज कि हमने ये कंफर्म कर लिया कि ये अप ट्रेंड में, फिर डेली में जाओ एंड डेली में सी देयर वाज दिस कंसोलिडेशन, यहाँ पे ये जीरो पे आया एंड देन इट स्टार्टेड राइजिंग हायर. So that was like a next signal that you had to capture on the daily chart. Right. No, I got that point, but my Yeah. only concern was this stock was already in uptrend. My concern was when there's a turnaround from downtrend on weekly, it is moving to. It Yeah. has just started moving upwards. So Yeah. at that time, what caution should one exercise? See, ideally, if you are a trader, okay, I mean, I believe if you're looking at the daily cycle, you would be wanting to trade for 10 days, 15 days, or 20 days, correct? Yeah, two weeks around, right? Correct. So then you would Right. want to be in the sign of strength, right? And not the stocks जो turn around हो रहे हैं. तो अगर market में see that's where I mean even if you see the RMI filter, तो उसमें खाली ये बता देने का सिस्टम को कि कौन से वीकली में भी बाय है वो बताओ, ओके, एंड कौन से डेली में न्यू टर्न अराउंड हो रहे हैं वो बताओ. New buy. Yeah. सो योर लिस्ट विल कम डाउन सिग्निफिकेंटली. Right. So I was just getting an idea how to capture the move earlier. Yeah. No, so this we will explain you in detail in this webinar. You know, when we do it Okay, in RMI, that's where Right. we'll extensively talk about it. Right. Okay. Thank you, Nepalji. Okay, next up is Narasimha Murthy. Thank you. Can you hear me? Yes. Yeah. Hi. Yes. I first of all, I record my appreciation for Jay for giving his daily reports in a very calibrated manner. So Thanks for all your support actually throughout. Kind of you, sir. Sir, I am having some odd doubt. I am interested in Nifty index futures. Right. So, is it possible to combine this daily swing and RMI? Yes, definitely. I mean, not daily Or swing. is it more of the same thing? See, what will happen is that daily swing will sort of tell you which is the point where we are getting oversold, correct? Yes. And RMI will tell you when is the point where the momentum will pick up. Okay. So what you might want to do is that, say, for example, I mean, over here, see, let's take an example over here. Okay, daily swing got oversold over here, correct, on 9th. Okay. Then what we do is that if we go on Nifty 50 and we check the ROIT setup over there, okay, so it gave a bullish crossover on 15th, 16th, approximately that time, right? So what daily swing will help you to predict is the bottom, you know, from where it can turn around. Momentum will help you to tell you कि कहाँ से momentum will start picking up. Okay.
So that way you can definitely do the combination. So like, I mean, you follow us on India charts, right? So you know that then over here position sizing becomes important, that maybe at this turnaround, you might want to take some position and you might want to add on more as and when other things starts confirming, like it, like it starts trading above the averages, then crossovers and so on. Okay. Thank you, sir. Thank you. Much obliged. Thank you. Okay, next up is Arun Kumar. Arun Kumar. Arun Kumar. He unmuted, but once again he got unmute. Okay, we'll take Premanathan. Hello. Yeah. Yes. Good morning, sir. Yeah. Thank you for the presentation. But I'm kind of a novice, so I don't understand many of the things. Probably I need to revisit your videos multiple times to understand whatever has been explained. Okay. I just wanted to ask only one question, that whether I can use this kind of approach for individual stocks. We are all talking about index level and like different indexes. Okay. Indices. See, I mentioned this in the start as well. Okay. This analysis, what we are doing now, okay, what we are trying to gauge is whether the index is gonna bottom out or no. Okay, or what is the direction of the index. See, what happens in the market is that when the, say for example, if Nifty is gonna rise, okay, most likely you will be on the right part if you choose the stocks, right? If the Nifty is gonna go down and you end up buying, then there are higher chances that you might end up losing money in those trades, right? So the first layer that what we are trying to put is that whether the market is gonna bottom or it is gonna top out, or in which direction the market trend will be. So once you put this layer, the next layer is to find the stocks. Okay, which will be discussed in the upcoming sessions. Exactly. So that's where I mentioned, see, there are two approaches which people can follow. Okay. One is to find whether the index is bottoming out or topping out. If it is bottoming out, then I would want to know which are the stocks that are outperforming, and that I will do it by understanding the relative strength analysis. Right? Once I understand which sectors are doing well, then I might want to find the stocks which are doing well through the RMI setup. Okay. All right. So I'll wait for the entire 4 or 5 sessions what you're planning to get over. Yeah. And the other approach is that, you just find out what is the tops and the bottoms in the Nifty index. If it is bottoming out, you directly try to find out stocks, and you might not want to, find sectors. So that is another approach. So that is where, we will extensively, teach everything. Then it's up to you, which way to go. I don't do kind of futures and options and the trading and all. I don't understand all those concepts. I'm just kind of a long-term investor. Yeah. So these all things will definitely help 12 years. I'm holding and waiting to grow. Some have grown up to 700%, 800% and all. Kind of. I wait very long. Right. No, so then in that case, now things like these will extremely help you, because given that you are a long-term investor, so you might want to also see that when the valuations are getting to an extreme, that might be the point that you want to act. Okay. So I think probably for you this might be very insightful, and that can help you immensely. Thank you so much. Yeah. Thank you. Harsh Agarwal. गुड मॉर्निंग जय सर। हाय, गुड मॉर्निंग हर्ष। सर जी एक चीज पूछना था, मुझे एक थोड़ा सा पूछना चाह रहा था कि जैसे कोई स्टॉक है सर, उसमें जो RMI है, मोमेंटम इंडिकेटर, वो सेल साइड में आ गया है डेली में, लेकिन वीकली और मंथली वो अपना बाय क्रॉसिंग पे है, राइट? और एज पर इलियट वेव के हिसाब से 1=5 हो चुका है। ओके। तो सर हमको क्या मतलब वीकली का सेल में जाने का वेट करना चाहिए, या फिर मतलब कि
फिफ्थ एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, वो कैसे कंफर्म कर सकते तो हैं वो सर? आपको डेली एवरेजेस बताएंगे ना कि वो डेली एवरेजेस के नीचे टूट रहा है कि नहीं। ओके, 2040 चेक करना पड़ेगा ना? यस। ठीक है सर, थोड़ा चलो ठीक है। सॉरी, आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। नहीं, next up is Baswaraj. Yeah, hi Jesh. Hi. I was just going through the scanners which you have showed, and Right. currently the daily swing and average swing. Right. Okay, it shows me that it has been top has been hit and it's coming back, Right. and the prices are still going up. So I see a divergence there. Correct. How do we read this? Whether the market is going to be top out sooner, or how? What should So be the see, reading? right. So see, this is where, a combination of scanners may end up helping you, especially from the short term, right? Now, see, what happens is that if I put daily swing over here, okay, average swing over here, and if I put OIPCR, right? So now see, what happens is that, like I told you, like daily swing may end up giving you very short-term signals. And you're right in pointing out that the Nifty index is rising higher, but this is falling down, right? That is sort of telling you that the momentum is losing in the near term, right? So then what you might want to do is that Nifty may, when you go, okay, you might want to see what is happening on the lower time frame, which is hourly chart. Okay, are we making higher high or no? Are we trading above the trend lines or no? So you might want to do those analysis, and once, say for example, if the trend line is broken over here on the downside, okay, then you might be even more cautious, because the sentiment indicator in which daily swing, which was telling you that the momentum is deteriorating, that might come true, and you might end up getting a 2 or 3 day kind of correction, which may end up pushing the indicator towards the oversold zone. Okay. So once we read these here, then we have to go back to the charts and do the analysis. Yes, because all these indicators na, that will show you a green or a red signal much earlier. Okay. And then your index needs to confirm that whatever the sentiment indicators are telling you, is the index confirming that. If not, then what might eventually happen is that you might end up seeing a pickup in the swing, and this 1 or 2 day correction, whatever has happened, that was just a minor correction, and that you will be able to sort of figure out through the Nifty index, like I mentioned to you. I mean, if you draw a trend line over here, okay, and say it doesn't break, so all you might end up seeing is that there is a pullback till this point, or maybe till the 20-hour average, and then again it might start rising higher. And in that sense, the swing which had come down, okay, that may also again start rising, like you see at this point, right? I mean, in this consolidation, it has come down over here, and then in this decline, in this 1 or 2 day decline, you saw the indicator coming to the oversold zone. Okay. Over here, you can see that there was momentum that was losing. What we saw was some bit of correction, but again, it started picking up. So that's where then, you might have to do some analysis on the Nifty index to gauge it, whether are we going to see a major reversal or no. And that's where, the other indicators, like I showed you, OIPCR, that will come into play, because see, this was only showing a bottoming out sign only recently, right? So ये swing तो क्या है, it will move very fast. Okay, मतलब ये OIPCR यहाँ से oversold तक, I mean overbought तक आएगा, उसके पहले swing might go 2 or 3 times in overbought and oversold zone. Okay. But then this will give you a perspective that this is only bottoming out right now, right? So then there might be a long way to go before you need to be more cautious. Okay. So this put call ratio also becomes an important indicator or data point. Yeah. That's where we have added it over here for the short term, because that will give you a more sane view. Because swing, what happens is that it will capture 5 day, 6 day kind of cycle, up, down, up, down, up, down. Okay.
And a combination of 2 or 3 when it comes to oversold or overbought, that is when it is very, very, classical. Yeah. It's, that Like you you have to see follow. over here, even if I add average swing. So like I mentioned earlier only, if 2 or 3 ends up, signaling bottom at the same time or around the same time within a day or two lag, because the rest of the 2 indicators like PCR and average swing, these are average of the underlying, right? So it might take some time for them to come to oversold. Maybe a day or two lag will be there. So that's where when you see them coming towards the same point, so that will be a sign of a meaningful bottom. Okay. Got it. Thank you. Yeah. Next up is Jaspal Singh. Jaspal Singh, yes. Yes, I wanted to ask about last season. Can I ask? Okay. Sorry, you wanted to ask about? Last session. Last session. Yeah, वो ऑप्शन बाइंग का स्टॉक ऑप्शन बाइंग का स्ट्रेटजी था ना? हाँ. वो सर अभी वो मोहित जी अवेलेबल नहीं है. हाँ, बट वी हैव द वेबिनार ओवर हियर. आप एक बार देख सकते हो ये वाला. नहीं वो ठीक है, तो उसमें एक डाउट था मेरे को, बस जस्ट क्लैरिफाई चाहिए था. हाँ ठीक है, पूछिए. हाँ, तो उसमें जैसे अबाउट रेजिडेंस के ऊपर कोई चीज है तो और उसका रिड्यूस हुआ है ओआई. हाँ. और नेक्स्ट डे बोलिंजर बैंड को वो ब्रेक कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है. ओके. और लेकिन उसका कंटिन्यूशन नहीं मिला है सेम डे, और उसका कंटिन्यूशन नेक्स्ट डे मिल रहा है, तो उसको कंसीडर कर सकते हैं या नहीं? उसका कंटिन्यूएशन नेक्स्ट डे मिल रहा है. यस. हाँ, तो बट आपको वो स्टॉप लॉस तो वो बताया गया है ना कि जो 15 मिनट्स के चार्ट पे जो लो रहता है, आई थिंक दैट बिकम्स योर स्टॉप लॉस. सो एज लॉन्ग एज योर स्टॉप लॉस डजंट गेट ट्रिगर्ड, तो आप वो पोजीशन में बने रह सकते हो ना. बिकॉज सी, जब वो रेजिस्टेंस के ऊपर भी ब्रेक होगा, इट वुड बी बिकॉज अप मूव आया है उसमें, करेक्ट. तो उसमें शायद ऐसा हो सकता है कि एक दिन का कंसोलिडेशन हो सकता है, राइट. तो दैट्स वेयर योर स्टॉप लॉस विल कम इनटू प्ले ओवर हियर. एंड एज लॉन्ग एज आपका स्टॉप लॉस नहीं ब्रेक हो, तो योर दैट ट्रेड इज स्टिल वैलिड, एंड दैट एंटायर प्रोसेस हैज बीन एक्सप्लेन्ड ओवर हियर इन दैट ऑप्शन. नहीं सर, स्टॉप लॉस नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे उसका उसको ब्रेकआउट नहीं मिला, बोलिंजर बैंड का ब्रेकआउट मिला, किसी कैंडल ने दिया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल उसका ब्रेकआउट नहीं दिया, तो हमारा तो एंट्री बना ही नहीं ना वहाँ पे. लेकिन वो नेक्स्ट डे ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम नेक्स्ट डे एंट्री कर सकते हैं क्या? हाँ, मतलब मेरे को ये नहीं समझा. पहले आप बोल रहे हो कि फर्स्ट डे पे ब्रेकआउट दिया, सेकंड डे पे ब्रेकआउट नहीं दिया, मतलब क्या कि वो सेकंड डे वो नहीं, स्ट्रेटजी में तो ऐसा था ना कि बोलिंजर बैंड का ब्रेकआउट दिया है फर्स्ट डे, ठीक है सर. लेकिन बोलिंजर बैंड का जो कैंडल क्लोज किया है, उसका नेक्स्ट कैंडल अगर उसका अपर साइड में निकलेगा, एंट्री तभी बनेगी ना उसमें. नहीं, सो इट इज, आई एम रॉन्ग. नहीं, इट इज व्हेन के बोलिंजर बैंड एक्सपैंड हो गया है, दैट इज द पॉइंट ऑफ. क्योंकि आप कितना कंफर्मेशन के लिए रुकोगे? जसपाल सिंह जी. यस सर, यस. नहीं, आई डोंट नो इफ आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, बट मतलब जसपाल जी, मेन थिंग इज दैट कि आप कितना कंफर्मेशन के लिए और रुकोगे, राइट. तो आई थिंक वो जब वो ब्रेकआउट हो जाता है एंड यू स्टार्ट सीइंग ओआई रिडक्शन, देन दैट विल बी द पॉइंट ऑफ एक्ट. मतलब व्हाट यू माइट वांट टू डू इज कि आप शायद 315 तक रुको, ये जानने के लिए कि एक्चुअली में क्लोजिंग ब्रेकआउट के आ रहा है कि नहीं. मतलब दैट इज वन एडिशनल फिल्टर दैट यू कैन पुट इट इन द लाइव मार्केट. यस सर, यस. तो नहीं, वो कंफ्यूजन ही था. ठीक है सर, सॉल्व हो गया. थैंक यू. या. Next up is Satyanathan. Yeah, good morning, Jay. Thanks for a very good explanation. One thing, I have been I am working, I have a day job.
So I am coming home and try to analyze and try to understand what is this platform. And I found this platform is extremely information content. So much information is there. But only one thing, like so many have pointed out, this I'm not able to save whatever settings I want. So that is kind of making me do it everything all over again. That is one thing. We are working on that. You are working on that. That is good. Yeah. Second thing, for example, now the previous speaker, he was asking about that option OA inside. For example, above resistance and below support. But is there any way, suppose I filter out this above resistance, this list of stocks, can I go to say Rohit momentum? Can I shortlist these only automatically instead of writing it down on a piece of paper? Just there should be a click so that I will go to that Rohit momentum indicator and see where exactly is. Yes. We want to put a click over here. Actually, it's already there. Already there, huh? No, I'm not. If you do See, over here. On hover, it will come usually. Okay. Just go there, Jay. Okay. What you can do is just go there. 1 minute. I'm going to options. Okay. Just click on the 1 second. Watch list. Watch. Bagal wala. No. On the hover itself, there are two buttons. The first button you click. You click. Okay. You'll get you can add everything on the watch list now. Okay. So you select everything. Name me. No. In the name only you can select. Okay. Yes. So now what I'll do, I'll add it to my watch list. Okay. Okay. The watch list is 33. Okay. Now I go to the scanners. I go to RMI. Okay. And I'll say in the basket only this one. Yes. So here all the stocks will come. Oh, okay. That is good. Okay. Okay. You can add it to your watch list and you can scan it by your watch list here. And you can add a multiple watch list also. Okay, that is good. Yeah, you can follow this process. And here only, in this chart only, suppose you are having this, instead of the candlestick, you are having this high-low. Yes, that will do it, sir. We'll change it to candlesticks. Yeah, we'll do it. Yeah. And that is one thing. Second thing, for professionals like me who have, a day job, is it possible that you give some kind of a template, some kind of a trading plan template, how to use this strike, especially for actually this is what the effort is. This is what the template is. Yeah, this is what we want to educate on, because see, honestly, this is what process that we follow. Okay. Yeah, that is okay. But what happens is here we have to sit in the webinar. Of course, webinar is I'm watching more than 1,000 videos I would have watched. That is a different story. But I'm not able to get a template, written down format. Step like a recipe. Have you joined our Telegram channel? Yeah, I have. Okay, we have pinned one video. Okay, we have pinned one message in the Telegram. All the important things about strike we have attested there. It is just 1 hour of video which is consisting of 6. Okay, all put together 15 minutes. Just go through everything. Even for long term. Even for long term. Even for long term, short term, everything is available over there. Yeah, so actually, what 6 best things that you can follow that we have already given over here. I didn't see. Can you show me where it is? Yeah. So I will tell you, this would be a similar message on that you may get on strike as well on the Telegram. Yeah, this one I saw. This. Yeah, this 6 videos, just go through it. So we have explained our strategy, how do we use it and how you can make the best use of it. Especially for long-term investors, RMI plus valuation. Okay, that is very important. Okay, to find stocks, RMI, to identify the best stocks to buy and sell opportunity using RMI. So you have to go through, sir. If you want to educate yourself, if you want to understand, you have to go through this video. So kindly go through. Yeah. Okay? That I will do. That I will. Yeah. Thank you. Okay, next up is Vinay Vijay. Hi Jay. Hi.
Thanks a lot for this seminar. I think this webinar, because till now I was not using sentiment indicators because it was too much of data and too many things, right? And everything looks similar. But I think this helped me, and I'll start using it going forward. One question I have is you mentioned about short-term trader, medium-term trader, and long-term trader, right? Yeah. What is the time duration which you say for a short-term and a medium-term? So like I mentioned over here, mostly this will help you from, 5-day perspective to 10, 15 days kind of perspective. Okay. The medium term would be more like, you will get the positional views from 2 to 3 months perspective. Okay. And then rest is, long term. That would take, even several months to play out those all views. Okay, so that means the trade is, valid for that much duration. Correct. So if it's medium term, then the trade is valid for 2 to 3 months. Correct. Vijay, there is no written rule that it is only meant for 3 months. It can get extended based on the market. Yes, the broader sense Yeah, is yeah, that you might get the trade between say 1 month to 3 month types when these sort of signal occurs. Got it, got it. Yeah, it's a probability. I understand, Yeah, Chavanji. I think. Yeah. I mean, based on your experience, I am just, just making that No. So it mention. is 1 month to 3 month, you can say. Okay, okay, But got it. these days, And FIIs are behaving very crazily. So, 2-3 दिन maybe they end up, covering big position. But ideally, it is 1 month to 3 months time. okay, got it. Okay. Okay. Thank Other you. question that I have Yep. here is that the indicators that you are adding, no? Is there a way to save a template? Like, No, can I save a that's what template I of mentioned. short-term? We are working on all those things. So everything will happen. Probably you might end up, saving your templates as well. Okay, short-term setups, medium-term setups, and then the moment you click it, all three appears. So we'll do that. We are trying to do that. Okay, great. And is it possible for us for you to give alerts when it goes to oversold and overbought? Because I won't be seeing it on a daily basis. Actually, alert is entirely new module that we have it in our list because we would want to get to that point where the RMI is giving buy and sell, if the FIs are reaching that extreme or no. Like you just put an alert and you get it. So Because at when the some point alert we comes, will do then we that. will focus. Yeah, at some Okay. point we'll do that, but that is not exactly a near-term plan, but that is there in our list that we want to do it. Okay, okay, got it. And other question that I had was this relative strength analysis, is it same as the RSI indicator or there is more to it? No. So it is purely measuring the performance based on the price action. Okay. Yeah. So that we'll cover, that we'll be covering it through heat maps. Okay, okay, got it, got it. Yeah. Okay, I think that's all I had. Thanks a Yeah. lot, Ray and Chavanji. Thank you. Last question is from Ashish. थैंक यू अगेन जी आप एक बार ICIL का चार्ट खोलेंगे अगर ICIL तो ICIL इंडो काउंट चार्ट्स इसमें जब हम रोहित सेटअप देखते हैं तो देयर बाय सिग्नल विच इज जनरेटेड ऑन अप्रैल ये जो 2024 वाला लास्ट बाय सिग्नल है हाँ ये वाला तो नहीं इससे आगे मतलब एज इन जीरो लाइन के ऊपर इफ यू मूव टुवर्ड्स द अदर साइड सॉरी व्हेन आई से अदर साइड टुवर्ड्स द 2025 मैं डेट एग्जैक्टली बता देता हूँ ये है आपका 26 हाँ ये वाला से ये जो बाय तो इज इट एक्चुअली बाय सिग्नल और नॉट फेब के थोड़ा सा आगे या इवन मई में भी हम देखेंगे बिकॉज ये जीरो लाइन के ऊपर है तो बट अगर आप देखेंगे तो साइड में नहीं लिखा है ना मतलब बेसिकली दिस लाइन शुड टच द जीरो लाइन व्हाट आई मेंट मतलब नॉट एग्जैक्टली के ये जीरो लाइन के नीचे से ही क्रॉस ओवर व्हाट आई मेंट वाज दैट कि ये ग्रीन लाइन है ना इट शुड टच द 0 पॉइंट so that sort of tells you that this is an up move and that this is a pullback cycle. तो अगर मैं साइड में देखूं तो वहाँ ऊपर साइड में आपके लिखा रहा है 21 मई 2024 को देयर इज अ न्यू बाय सिग्नल एज इन द साइड में ग्राफ सा बना हुआ है तो माय क्वेश्चन इज 21 मई को एक्चुअली में बाय सिग्नल था अगर मैं इसमें बाय कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ नहीं दिस विल नॉट बी अ वैलिड वन बिकॉज ये 0 के ऊपर है ना ये अगर इधर से नीचे आके बाय देता है ना दिस इज अ मोर बेटर सिग्नल विच वी फॉलो
But then isn't it contradictory कि वहां पे मेरे को buy बता रहा है, but you're saying we cannot buy because obviously the blanket rule is कि 0 से नीचे के बाद ही buy signal शुरू होगा. हाँ. So Okay. your point was to capture over here, not over here. I mean, if you have missed it, either you have to wait patiently till it come back to the zero line and then again give a buy, or you go to the early time frame and you try to find out if you are then getting such setup. ओके. नाउ दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने हर एक स्टॉक का अगर देखना है, जैसे मेरे को 10 स्टॉक है तो मेरे को हर 10 चार्ट्स में जाना पड़ेगा और हर 10 में देखना पड़ेगा जीरो से नीचे गया है कि नहीं गया है. देयर इज नो Yes. फिल्टर आई कैन फाइंड आउट किसी फिल्टर में कि जीरो से नीचे किस टाइम गया था, कौन सा वाला गया था. नहीं, so उसमें the issue that we have highlighted in all the webinars and this people keep asking us is that see, there is no way to judge मतलब see, while we were doing all those testing and all, तो बहुत टाइम क्या हो रहा था पता है कि if say this is the zero line, ठीक है, ये इंडिकेटर यहां से आके भी जा रहा है ना, this we wouldn't have been able to capture it. Okay, and these sort of patterns are also extremely important. Like, I mean, if you see something for like Nifty metal, this sort of indication has happened on the monthly chart. ये आपको दिख रहा है, ये zero पे नहीं आया. This was 1.64. This the system wouldn't have captured. But this is the buy signal क्योंकि जीरो के मतलब जीरो के बिल्कुल पास से गया है. हाँ, पर ये क्या, ये सिस्टम आइडेंटिफाई नहीं करेगा क्योंकि ये जीरो तक गया ही नहीं था. Makes sense. So that is why what we have done it is that कि हमने यहाँ पर आपको चार्ट दिखा दिया है and we have tried to increase the speed as well. तो ऐसा नहीं है कि आप एक क्लिक करोगे तो आपको 10 सेकंड 20 सेकंड लगेगा, एक सेकंड में आ जाएगा चार्ट. You just have to just click and hover and see. Makes sense. और आई थिंक आज का जो सेशन था, वो जो आपने मीडियम और लॉन्ग टर्म किया, अगर मैं मंथली फ्यूचर्स करता हूँ, जैसे मई का फ्यूचर, जून का फ्यूचर, तो अगर मेरे को जैसे अभी देखना है कि मेरे जो भी हमने आज सीखा उसको मैं कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ मंथली फ्यूचर्स के लिए, एज इन अगेन ऑल दोज फोर बट इन मीडियम और लॉन्ग, बिकॉज मंथली फ्यूचर तो हर मंथ एक्सपायर होता है. हाँ, so you would be more concerned with this part then. Okay. Yeah, because these all takes a lot of time to play out. So if you are having a huge portfolio, you might want to look at this more closely, especially because see क्या होता है कि ये indicators overbought या extreme तब भी आते हैं when you have seen a huge run up, and if you have seen a huge run up in the index, that means your stocks would have done very well. In fact, market चलने के बाद भी अगर if your stocks are not doing well, then that is the first indication for you to move out of those, because those are not showing strength. Correct. The second one would be when would be the time to book profits in them, right? Or at least when will be the time to manage your risk. So that's where we will come to these approaches for you to understand. I mean, how long can you trail and so on. Makes sense. So make sure that every one of you here just take out some time and attend this webinars, or else at least watch the recordings. We'll post it. I hope everyone is a part of our Telegram channel. And in the end, if you like the software, please do subscribe. You can go to plans and billings. Jay, if you can show. We are bringing the RRG also, which is called as relative rotation graphs, which is available only on platforms like Bloomberg, Reuters, and we got the license for Indian markets also. So we are going to bring it. So you can go here and subscribe. Yeah. So thanks, Ashish. Thanks everyone who have been a part of this webinar. The second webinar. Yeah, just Shawan, Ashish, any more questions you have? Sorry. नहीं, आई थिंक मेरे को आइडिया लग गया, मैंने वो देखा था. आई एम नॉट श्योर व्हाट वी वर टॉकिंग लास्ट, बट हाँ मेरे को वो जो आपने मीडियम टाइम बताया, मीडियम टाइम के चारों इंडिकेटर देखो एंड देन डिसाइड करो. एंड आई थिंक वन ऑफ द थिंग, हाँ, मतलब वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी वांटेड टू बकेट इज बिकॉज सी पहले ना हमने इंडिकेटर सबको एक्सप्लेन किए, तो लाइक समवन टोल्ड अर्लियर आल्सो दे वर लॉस्ट कि कौन सा कब यूज करना चाहिए. सो दिस टाइम वी हैव कैटेगोरिकली सेड के मतलब व्हाट वी फॉलो, because see, this is honestly what we follow in our analysis, in our day-to-day analysis to capture the short-term, medium-term and long-term trends. So that is what we thought that it would be helpful to, actually give you all the strategy that we follow, so that, it might make more sense to you.
मंथली फीचर्स के लिए मेरे को मीडियम वाला देखना है, बस ये समरी है। यस, बिकॉज ये क्या है, आप ये देखोगे तो दिस विल बी टू शॉर्ट, मतलब इसमें 4-5 दिन में अगर सिग्नल भी खत्म हो जाएगा देन इट डजंट मेक सेंस फॉर यू, स्पेशली व्हेन यू आर लुकिंग एट 2 to 3 month काइंड ऑफ टाइम होराइजन। आई थिंक या जो आपने मेरे को पॉइंट बताया, अगर मैं लॉन्ग टर्म देख रहा हूँ और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए, तो आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ द पीपल विल बी इंक्लाइंड के लॉन्ग टर्म में देखा मैंने सब कुछ पीक पे चल रहा है, लेट्स सेल ऑफ। तो वो ये सेल ऑफ, बट देन नोबडी बाइज अगेन ना। मेरे पास जो लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स हैं एग्जैक्टली, रखे हुए हैं, तो बिकॉज नोबडी। ये भी आप देखो ना, जैसे कि ये मैंने फ्यूचर ओआई बाय इंडेक्स बताया, ठीक है, सो दिस हैड एक्चुअली वर्कड वेरी वेल इन 2008, ओके, सी ओवर ईयर इफ आई डू, हाँ, सो एक सेकेंड ना, ये फ्यूचर ओआई इंडेक्स डेली, आपको डेली देखना है? नहीं, मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि ये जो सिग्नल्स है ना, ये देखो, ये 2008 में वर्क किया था, ठीक है, जब ये 1700 पहुंचा था, वहां से यू एंडेड अप सीइंग अ बिग करेक्शन, ओके। ये 2018 में ये इंडेक्स ने वापस ये पीक का सिग्नल दिया था यहाँ पर। यहाँ पर मिड कैप सारे टॉप आउट हो गए थे, मिड कैप्स फेल 30-40% टिल द कोविड लो। निफ्टी में क्या हुआ, डाइवर्जेंस बनता गया, एंड इफ यू आर इन द मार्केट यू वुड नो कि यहाँ पे खाली 7-8 स्टॉक ही चलते थे, वो व्हाट वी यूज्ड टू कॉल इट एज ऋतिक स्टॉक्स, वो एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस एंड सो ऑन, राइट। अभी ये इंडिकेटर वापस ये लेवल्स पे आ गया, ठीक है। नाउ सी, if you're a prudent long term investor now, you might not want to commit, I mean you might not be all in at this point, because this indicator is sort of throwing you that caution. And the other important part is that you would know, okay, now that it has come towards the oversold zone, and if it reverses from here and breaks some crucial levels, then you might want to manage your risk more actively. बिकॉज ये जब तक ओवरसोल्ड में नहीं आता ना तब तक ठीक है, आई मीन ओवरबॉट में नहीं आता तब तक यू कैन कीप होल्डिंग होल्डिंग होल्डिंग, राइट। देयर विल बी बाउट्स ऑफ करेक्शंस इन बिटवीन दैट यू विल सी, बट इट इज ओनली एट दिस पॉइंट वेर यू माइट वांट टू एक्टिवली मैनेज इट, बिकॉज नाउ यू आर सीइंग दोज रिस्क के ये एकदम हाई लेवल्स पे आ रहा है। सो ये है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। हाँ, सो अगेन ये क्या है, ये जो है ये जैन में आ गया था, ठीक है, बट इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आई मीन देयर इज नो थंब रूल के ये इधर आ गया तो नेक्स्ट डे से ही गिरना चालू होगा, राइट। सो व्हाट यू माइट वांट इज दैट sentiment indicators are throwing you those red flags, but you might want those things or those signals on your index as well, where price is also confirming, because sometimes you can see that prices may diverge. Like, say in the breadth that you can see over here, market is going higher, but breadth last few days se niche gaya hai. So this can be a bit concerning, right? So that's where, you would do all the combinations of medium term, long term indicators and all, and see where are we placed, so that you can manage your portfolio more actively, and you can, protect your gains basically. This one which you just opened, अगर ये रेशियो ऊपर जा रहा है then it is oversold. No, so this is AD ratio. If this is going up, it tells you that the market में breadth अच्छा है, that's why it is going up. Okay. Okay. ये एक जो volume put call था ना, I mean, see, you can see the recording also once again, but ये जब ऊपर जाता है ना, this is a long term indicator again. Okay, and this sort of tells you कि ये जब रेशियो ऊपर जाता है ना तब बॉटम बनने के अच्छे चांसेस होते हैं, बिकॉज इट इज टेलिंग यू दैट वॉल्यूम्स पुट में बहुत ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू कॉल्स, एंड दैट माइट बी अ साइन ऑफ पैनिक ऑफ ईयर। ठीक है, थैंक यू, आई विल जस्ट रिव्यू दैट। वन लास्ट थिंग इज, आपके पास 5 है ना वॉच लिस्ट, आई एम नॉट श्योर आप और यूजर ने भी रिक्वेस्ट करा है, बट इफ यू कैन इंक्रीज दैट लिमिट ऑफ मोर देन 5 वॉच लिस्ट्स। Sure, we'll consider that. We'll do it. Yeah. Thank you, Chavan. Thank you, Jay. I really appreciate. Thank you so much. Thank you. Yes. Thank you for your time. To every one of you, thank you. I hope you had a knowledgeable session. If you liked our tool, do subscribe and be a part of the Strike community.
Next week, definitely RRG is getting released. Looking forward. I hope you also like this webinar. Thank you. You can put it in the chat section. Don't miss the other webinars. Be a part of our Telegram channel. I've already posted the link in the chat bot. Please join everyone. We'll post the recordings in the Telegram channel also. Okay. Thank you so much. Thank you.